कल कॉन्फ्रेंस में हशमत उनके जो कप्तान हैं उन्होंने कहा, उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या स्पिनर को ज्यादा महत्व देंगे। उन्होंने हंसकर बात को टाला, लेकिन आज उन्होंने स्पिनर को महत्व दिया और उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारे बैट्समैन को बहुत बड़ी भूमिका करनी होगी। मिशेल स्टार्क इस बीच ये पहले विकेट की भागीदारी तोड़ने के प्रयास में ऑफ स्टंप के वर्तमान हालात को देखते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की थी ये गेंद। हालांकि अब स्लिप हटा ली गई है, स्लिप्स नहीं है, एक भी स्लिप नहीं है। पहले 2 ओवर तक लगातार 2 स्लिप लगा के रखी थी कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन फिर भी इस तरह की गेंदबाज से इस तरह की गेंद से छेड़छाड़ करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले 4 ओवर जो ज्यादा जोश के थे वो निकाल रखे हैं। गुरबाज इस समय 13 रन बनाकर सामना कर रहे हैं मिशेल स्टार्क का। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमारी तरफ आते हुए और ये गेंद इसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ, लेकिन गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा लिया, आई डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर उसको आसानी से फील्ड कर लिया गया। जब तक कि उसको फील्ड किया जाता 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अफगानिस्तान का 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। मिशेल स्टार्क काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें तो उन्होंने 3 अच्छी पारियां खेली हैं इस वर्ल्ड कप में। 47 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 80 रन बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 65 रन बनाए। इब्राहिम जादरान को इस बार ये गेंद इसको ऑफ स्टंप से बाहर से कलाइयों के उपयोग करते हुए उसको आसानी से फ्लिक किया, जब तक इसको फील्ड करता स्क्वायर लेग का फील्डर, जो कि स्क्वायर लेग एम्पायर के दाईं ओर खड़ा है, और तब तक आसानी से 1 रन और ले लिया। 22 रन 4.3 ओवर का खेल है। हमारे सामने जो है स्टैंड्स, अब उसमें काफी लोग दिखने लगे हैं। और अगर अफगानिस्तान टीम की बात करें तो अफगानिस्तान टीम का जो होम क्रिकेट ग्राउंड था पहले देहरादून था, अभी नोएडा है, और इस समय लखनऊ उनका होम क्रिकेट ग्राउंड है। तो भारतीय परिस्थितियों से उनकी जो वाकिफ है वो बहुत वाकिफ है और भारतीय लोगों से उनका मिलना जुलना काफी रहता है। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को कवर्स में फील्ड किया, मार्कस स्टॉइनिस ने इसको फील्ड किया, कोई रन वहां नहीं मिलेगा। 4 गेंदें इस बार अभी तक बिल्कुल शांत रखा है मिशेल स्टार्क ने, लेकिन बहुत उमस है, गर्मी है, जैसा अमित ने आपको बताया। 36 डिग्री का इस समय टेम्परेचर है। फील्ड अब स्लिप नहीं है, कैचिंग क्लोज कैचिंग पोजीशन में कोई भी खिलाड़ी इस समय नहीं है, और मिशेल स्टार्क को अपनी लाइन और लंबाई पे ही निर्भर रहना होगा। और ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को शॉर्ट गेंद थी, घूम कर मारा, बिल्कुल 360 डिग्री पे नटराज की तरह घूमे और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। बहुत शानदार स्ट्रोक, कोई मौका नहीं क्योंकि वहां कोई फील्डर है ही नहीं। गुरबाज, और गुरबाज जाने जाते हैं इस जो है इस तरह के स्ट्रोक खेलने के लिए। तो इंग्लैंड के खिलाफ गुरबाज ने 80 रन बनाए थे जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। पाकिस्तान के खिलाफ 65 रन बनाए थे जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो गुरबाज का बल्ला अगर चलता है तो यह अफगानिस्तान के लिए एक बहुत साइन होगा। 18 रन अब तक वो बना चुके हैं। मिशेल स्टार्क इस ओवर में अंतिम बार ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को बहुत अच्छा लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और कमाल का रन लिया, बहुत अच्छा रन लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है गुरबाज और इब्राहिम जादरान की। 27 रन बिना किसी विकेट के 5 ओवर की समाप्ति पर। इस बीच बातचीत चल रही है कुछ खिलाड़ियों के बीच में। पैट कमिंस बात कर रहे हैं जोश इंग्लिश से। कुछ पहले उन्होंने सोचा, लेकिन अभी जोश हेजलवुड को ही वापस गेंदबाजी पे बुलाया। जोश हेजलवुड ने जो सब्स्टिट्यूट फील्डर हैं उनको इशारा किया, कुछ पानी किया, ब्रेक लिया। अफगानिस्तान के बैट्समैन भी एक पानी का ब्रेक ले रहे हैं, उनके भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स उनकी मदद करने आ गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि बाहर उमस बहुत है।
लेग पे 30 गज के घेरे के अंदर है, ये कैचिंग पोजीशन भी हो सकती है। और बहुत अच्छा रन, फुटबॉल खेलते हुए जोश हेजलवुड ने उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन गुरबाज ने बहुत अच्छा रन लिया। एक रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 5.3 ओवर्स की समाप्ति। अभी ये छठा ओवर चल रहा है। तो जोश हेजलवुड के लिए जो हम बात कर रहे थे, एक लेग स्लिप के आगे से कि लगभग सिचुएशन से आगे से एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग उसका कह सकते हैं, एक शॉर्ट मिड विकेट है, एक मिड ऑन है और एक डीप मिड विकेट है। ये 4 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं। इसका मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से कहीं ना कहीं बल्लेबाज को टेस्ट जरूर करेंगे। इब्राहिम 8 रन बनाकर जोश हेजलवुड के सामने राइट आर्म ओवर द विकेट, और जैसा हमने कहा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से जरूर टेस्ट करेंगे, वैसे ही शॉर्ट गेंद कंधे का पूरा जोर लगाया, लेकिन व्यर्थ गया कंधे का जोर, क्योंकि लेग स्टंप की लाइन को छोड़कर जा रही थी और एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने आसानी से इसको वाइड करार दे दिया। जोश हेजलवुड को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कंधों पे हाथ रखकर एम्पायर की तरफ से एक सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन निश्चित तौर से गेंद बिल्कुल वाइड थी। और अब जोश हेजलवुड को इस ओवर में चौथी बार, क्योंकि चौथी बार वो आ चुके थे लेकिन वो गेंद वाइड थी, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद और अच्छी गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छी उसकी वहां फील्डिंग भी कर ली गई। एक रन लेने के बारे में सोच रहे थे जादरान और गुरबाज, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर स्टॉइनिस की। स्टॉइनिस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग जो है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और पूरी जान झोंकते हैं और अनुभव बहुत बड़ा है इनके पास। जोश हेजलवुड की अगर बात करें तो जोश हेजलवुड का क्रिकेट जो करियर है वो बहुत अच्छा करियर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए कमेंटेटर बॉक्स शोर की तरफ से, और इस गेंद को आसानी से डीप थर्ड मैन की तरफ खेला। जब तक इस गेंद को जाम्पा फील्ड करेंगे 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ अब इब्राहिम ने अपना स्कोर 9 तक पहुंचाया। गुरबाज को स्ट्राइक पे दिया। गुरबाज जो कि काफी अच्छी गेंदबाज बैटिंग कर रहे हैं, एक आध मौका उन्होंने जरूर दिया है। अगर हम बात करें इब्राहिम जादरान की, तो इब्राहिम जादरान ने भी ज्यादा बहुत अच्छा प्रदर्शन तो इस वर्ल्ड कप में नहीं किया, लेकिन 2 स्कोर उनके अच्छे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 87 रन बनाए थे और 39 बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। इस बीच कवर्स में आती हुई इस गेंद को फील्ड कर लिया गया बहुत आसानी से डेविड वार्नर के द्वारा। अंतिम गेंद थी ये जोश हेजलवुड की। 6 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 30 रन बिना किसी नुकसान के। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। 6 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बिना किसी नुकसान के। गुरबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 20 रन बनाकर अभी नॉट आउट हैं। सामने वाले छोर की तरफ से गेंदबाजी में परिवर्तन है, ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं, और हमारे छोर की तरफ से, कमेंटेटर छोर की तरफ से कमेंट्री में परिवर्तन है, अमित अरोड़ा मेरे साथी। Thank you very much, Dinesh. So Glenn Maxwell is being introduced in the 7 matches so far in this edition of World Cup. He's picked up 4 wickets. A nice little partnership developing between the openers. Afghanistan 30 for no loss after 6 overs, so that's a run rate of 5. First power play is on right now, so a maximum of 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. Maxwell begins. The first delivery slightly on the leg side, and that has been hit towards the leg side for no run, towards the short fine leg position. Maxwell missed out on the previous match Australia played against England. In comes Maxwell, second one, slight flight on the leg side as well. This time it was towards the backward square leg region, and 1 run results. So Ibrahim now comes to double digits. He's reached 10. This is the 7th over in progress.
Glenn Maxwell had missed that previous match Australia played against England because of neck concussion, a slight injury he had when he was playing golf. But he is fit and back into the playing 11 today. One of the two changes Australia has made to the playing 11 today. Mitch Marsh, Glenn Maxwell in the playing 11, and Steve Smith, Cameron Green missing out. Rahmanullah Gurbaz batting on 20. Now taking strike to Glenn Maxwell. Slightly short pitch delivery and no problem whatsoever for the batter to hit it towards the mid-wicket area for a single. Skipper Pat Cummins there picking the ball. So 2 singles so far from the first 3 deliveries of Glenn Maxwell over. He finishes his over pretty fast and has been economical as well in the series. This one in line with stumps. No run results. This is the beautiful city of Mumbai. Wankhede Stadium that was established in 1974. Spectator capacity of 32,000, and I'm sure as the evening will progress, we'll have a full house here today. This one was short-paced, has been hit towards the mid-wicket area. Will it go for a boundary? No. Travis Head dives, stops the ball, and before he could throw it back to the keeper, 2-run results. So this was a little short-pitch delivery, and there was enough freedom for the batter to have free hands there. They could manage only a single there, in fact. So very good fielding in the deep by Travis Head, restricting that just to a single. That delivery was a dot delivery. So Glenn Maxwell has a good first over, just given away 3 singles of it. Afghanistan 33 for no loss after 7 overs. Our statistician Prakash Tapasvi tells us that this is the 4,696th ODI. Australia versus Afghanistan, 53rd ODI as far as the venue Wankhede is concerned. Australia have played 5 matches at Wankhede before this, won 3, lost 2, and Afghanistan are playing their first ODI today at this venue. Overall, Australia has played 986 ODIs, won 597, lost 346. Afghanistan has played 159, 177, lost 77. Josh Hazlewood, that was the first delivery, nice delivery on the middle leg stump as the batter just hit it on the offside towards the gully area, no run results. So the bowling change happened for Glenn Maxwell, but Josh Hazlewood continuing from this end. Overall in this tournament, if you look at the batters, it's been Quinton de Kock who's got the maximum number of runs. Virat Kohli up there at number 2, and then Rachin Ravindra. 3 batters who've scored more than 500 runs. Hashmatullah Shahidi has scored 282 runs, so it's been a good tournament for Afghan skipper as well. In comes Hazlewood. Nice delivery, a length delivery in line with the middle and leg stump. Ibrahim Zadran just respecting the delivery, no run results. That was bowled at a speed of 132 km per hour. Josh Hazlewood has been very impressive today. This is his 4th over, has just given away 11 runs. No wickets so far. He's back in this tournament. He's not picked up wickets to his standards. There's always a requirement from the captain for Josh Hazlewood to also pick up wickets in the power play. In comes Hazlewood. Over the wicket, that was drifting on the leg side, has been punished towards the backward square leg for a boundary. So welcome boundary for Afghanistan. Ibrahim Zadran, 2nd boundary for him. Hazlewood straying this delivery on the leg side. It was a short ball as well, and a short ball on the leg side. All Zadran had to do was just glide it, smash it, and use the pace of the delivery as well, and it had full return on it from the time it left the bat. Afghanistan 37 for no loss after 7.3 overs. Josh Hazlewood, 4th delivery. This one was better. Is he out here? Keeper is asking for it. So is the bowler. Did it touch the bat on his way? Are they appealing for caught behind? Pat Cummins is asking the bowler and the keeper, what's their take? Will Pat Cummins take the DRS? 3 seconds left. Yes, he does. Pat Cummins, with just 2 seconds left,
has taken the first review. Remember, both the teams have got 2 reviews each. Australia is utilizing their first review. What's the story here? Ibrahim Zadran was the batter. Josh Hazlewood, the bowler. And after being hit for a boundary towards a backward square leg, this was the 4th delivery of the 4th over of Josh Hazlewood. And the batter, Ibrahim Zadran, completely missed that delivery. But did he nick it on its way? Did it hit the thigh or the bat? As the replays are being shown here on the giant screen, all the spectators gathered here, the players as well, will look at the ultra edge and did it hit the bat? No, it didn't, and therefore Australia have lost their first TRS review. So Afghanistan 37 still for no loss. Ibrahim Zadran survives. Certainly there was a very good delivery by Josh Hazlewood. The batter had no clue about it. Josh Inglis was confident from the word get-go that it did hit the bat as well, but that wasn't the case. So Josh Hazlewood getting ready now to bowl his next delivery from the media end. That's where the Akashvani commentary box is situated as well. And he's making slight changes to the field as the batter at the non-striker is also getting ready, coming back to take his position at the non-striking end. That's Rahmanullah Gurbaz. On strike, Ibrahim Zadran once again. 5th delivery of Josh Hazlewood, 4th over. Over the wicket. Short delivery has been hit towards the offside, towards the point area. And that will be fielded there for one more run. Afghanistan 38 for no loss. And with that single, Ibrahim moves to 15. And now it will be Rahmanullah Gurbaz who will be taking the strike. It's a nice partnership. And during the review, Ricky Ponting, just lifting his finger indicating that according to him it was out. But that was not to be. So for one last time in this over, Josh Hazlewood running away from us. Short pitch delivery once again that has been hit towards the mid-wicket area and out. It's been caught at the mid-wicket. Rahmanullah Gurbaz cannot believe it. But he has to depart. It was a loose delivery from Josh Hazlewood. It merit that particular shot. But Rahmanullah Gurbaz didn't hit it from the middle of the bat. He wanted to hit it towards the leg side. It went to about backward square leg, mid-wicket area. And the fielder there made no mistake. So the first Afghanistan wicket has fallen. A disappointed Rahmanullah Gurbaz after scoring 21 of 25 deliveries, heading back to the pavilion, caught by Mitchell Starc off the bowling of Hazlewood. That innings of his was punctuated with 2 fours and a strike rate of 84. So after 8 overs, Afghanistan 38 for the loss of Gurbaz's wicket, and in comes Rahmat Shah. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So in his 4th over, Josh Hazlewood gave away 5 runs and picked away that wicket of Rahmanullah Gurbaz. In 4 overs, 16 runs, and Hazlewood has picked up 1 wicket. And to continue with ball-by-ball commentary and celebrate that first wicket for Australia, please welcome Dr. Dinesh Nagpal. बहुत-बहुत धन्यवाद अमित. और ये जो विकेट मिला है गुरबाज का, ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि विकेट में मूवमेंट नहीं था, कुछ नहीं था. तो जैसा कि पिछले ओवर में हमने बताया था आपको कि 4 फील्डर रखे गए हैं 30 गज के घेरे के ऊपर. 3 फील्डर हैं ऑन साइड में, एक जो है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की पोजीशन में लेग स्लिप से आते हुए, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर था. और उसी फील्डर के ऊपर ही आकर गुरबाज ने शॉट खेला. ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया. इस बीच ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को इब्राहिम ने खेला, और इस शॉट के लिए, ग्लेन मैक्सवेल की इस गेंद के लिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो लगा रखा है, उसने आसानी से इसको फील्ड कर लिया. कोई रन नहीं मिलेगा. ग्लेन मैक्सवेल बहुत छोटा रन अप है उनका, और बहुत तेजी से अपना ओवर समाप्त करते हैं. बैटर पैड को साथ मिलाकर मजबूर किया. ग्लेन मैक्सवेल की तेज गति की गेंद थी ये,
बनिस्बत जितनी गति से वो करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, तीसरी गेंद, और इस बार इसको हवा में उछाल कर खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन चूंकि शॉट मिस टाइम किया था, जितना खेलना चाहते थे उतनी अच्छी से खेल नहीं पाए, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, वरना ये एक और खतरा हो सकता था। 2 रन जरूर मिले वहां पर इब्राहिम जादरान को। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर, और लेकिन इस बार इसके लिए फील्डर लगा रखा था ट्रेविस हेड को। डीप फाइन लेग की तरफ गेंद आती हुई अपने बाईं ओर दौड़ते हुए लगभग डीप स्क्वायर फाइन लेग पर उसको फील्ड कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। और अब रहमत शाह, जो कि तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं और इस बार इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा स्कोर रहा है वो है 77 रन। पाकिस्तान के खिलाफ नॉट आउट रहे थे वो, और 62 रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पुणे में बनाए थे। धन्यवाद प्रकाश तपस्वी जी। राइट आर्म ओवर द विकेट, इसको खेला शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। स्टॉइनिस ने इसको तेजी से फील्ड कर बॉलर की तरफ फेंका। बॉलर ने स्टंप्स गिरा दी, लेकिन दोनों के दोनों बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर और स्ट्राइकर क्रीज के अंदर थे। और ग्लेन मैक्सवेल इस ओवर में अंतिम बार राइट आर्म ओवर द विकेट हमारी तरफ आते हुए शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसको शॉर्ट पॉइंट में पंच किया, लेकिन रन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट ग्लेन मैक्सवेल को दी गई है। 9 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। तो इस तरह से जैसा मैंने बताया कि रहमानुल्लाह गुरबाज का जो विकेट है वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से लिया गया, और बार बार जोश हेजलवुड गेंद कर रहे थे वहां पे। उन्होंने 1-2 चौके भी खाए, लेकिन अंततः उनको सफलता मिली विकेट लेने में। और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन इस छोर की तरफ से किया गया, हमारे छोर की तरफ से, कमेंटेटर बॉक्स छोर की तरफ से। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पैट कमिंस की तेज गति की गेंद, बैटर पैट को साथ मिलाया, स्टंप्स के बिल्कुल सीधा रहती हुई। और ये बहुत अच्छी बात है, पैट कमिंस जैसे एक बहुत उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, क्योंकि पैट कमिंस ने कोई लूजनर नहीं फेंका, सीधा आते ही बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग शुरू की। पैट कमिंस का लंबा अनुभव है, कप्तान तो है ही हैं इस टीम के। पैट कमिंस ने 84 मैचेस में 136 विकेट लिए हैं, 5 विकेट 70 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इस बार यह गेंद आ रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। किसी को भी हिलने का कोई मौका नहीं मिला। इब्राहिम जादरान ने इस गेंद को, और जबकि वहां पर ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर हैं और 1 खिलाड़ी पीछे बाउंड्री पर है, उन जो एक दीवार बना रखी थी, एक आर्क बना रखी थी, अलग अलग जगह पर खिलाड़ी खड़े हैं, उनके बीच में से, जैसा मैंने आपको बताया था, कवर्स और मिड ऑफ के बीच में काफी फासला है, और उसमें से निकाला। ओवर पिच गेंद थी पैट कमिंस ने, पिछली गेंद उन्होंने अच्छी की थी, सही दिशा थी, लेकिन लंबाई ज्यादा कर बैठे। ओवर पिच गेंद पे इब्राहिम जादरान को कुछ नहीं करना था, सिर्फ बल्ला लगाया, और तेज गति के गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार बेहतर गेंद, और बैटर पैट को साथ मिलाकर बॉलर्स बैक पुश करना चाहते थे, लेकिन गेंद आई मिड ऑफ की तरफ और वहां इसे आसानी से फील्ड कर लिया गया और कोई रन नहीं मिलेगा। जोश हेजलवुड वहां है 30 गज के घेरे के ऊपर, बिल्कुल फील्डिंग कर रहे हैं। इस बीच पॉइंट और कवर के खिलाड़ियों ने आपस में जगह बदली। आइए फील्ड की बात कर लेते हैं। स्लिप नहीं है, एक डीप गली है, एक स्क्वायर पॉइंट जो थोड़ा सा फाइन किया गया है पैट कमिंस, और ये जो एक कवर्स स्क्वायर लेग स्वीपर पॉइंट ने ऑफ साइड में दिशा आपस में जगह बदली थी, वहीं आकर गेंद रुकी और फील्ड कर लिया गया। तो हम फील्ड की बात कर रहे थे। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के घेरे के अंदर है, 1 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर है, थर्ड मैन कोई नहीं है। वो जो खिलाड़ी है वो डीप पॉइंट है। 4 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर बिल्कुल समानांतर एक दूसरे के सामने, मिड ऑफ है, कवर्स है, स्वीपर पॉइंट है,
और एक डीप गली। इस व्यू रचना के साथ पैट कमिंस, और इस बार ये गेंद लेग स्टंप पर आई, उसको खेला ऑफ साइड में। विकेट कीपर ने दौड़ते हुए उसको फील्ड किया, स्टंप्स पे मारा, लेकिन वहां ओवर थ्रो हुई, कोई फील्डर वहां नहीं था। विकेट जरूर गिराई जोश इंग्लिश ने, लेकिन उसका नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि एक रन के साथ छोर बदल लिया दोनों ने, इब्राहिम जादरान और रहमत शाह ने। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रहमत शाह ने 77 रन अधिकतम स्कोर है उनका नॉट आउट इस वर्ल्ड कप में, और 62 रन उन्होंने बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ पूना में। 52 रन बनाए उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ। ये सूचना प्रकाश तपस्वी जी की तरफ से। हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रकाश जी और हमारे स्कोरर सुनील लांडके जी लगातार हमें बहुत रोचक और नए नए आंकड़े और नई नई सूचनाएं सुनील जी चलते हुए मैच से और प्रकाश जी पुराने रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहते हैं। पैट कमिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार बहुत अच्छी गेंद। बैटर पैट को साथ मिलाया, कोई मौका नहीं जब तक इस गेंद को फील्ड करते लबुशेन और थ्रो करते पैट कमिंस ने अंपायर के पास आकर अपनी टोपी ली। इसका अर्थ ये हुआ कि 10वां ओवर समाप्त हुआ। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान का स्कोर। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर बहुत रोचक मुकाबला चल रहा है। अफगानिस्तान का एक विकेट जा चुका है। गुरबाज ने एक गलती की और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। रन रुके हैं, दूसरा पावर प्ले शुरू हो रहा है। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 11वां ओवर, और ग्लेन मैक्सवेल ये कैसा ओवर डालेंगे, आइए अमित अरोड़ा। Thank you very much, Dinesh. In 2 overs so far, Glenn Maxwell has given away 6 runs, hasn't picked up any wicket. In comes Glenn Maxwell. That first delivery is overpitched on the pads, has been just hit towards the mid-wicket area for an easy single. Ibrahim with that single moves to 25 of 33 deliveries, and in this calendar year 2023 he has now scored 734 runs. That's the highest by any Afghanistan batter for this particular calendar year. On the other side, Rahmat Shah still on not, and almost a similar ball, similar effort towards the mid-wicket area, and Rahmat scores his first run as well. So Rahmat on 1 now, and Rahmat Shah has been in good form in this particular tournament. In that last match Afghanistan played, he had scored a 50 as well. Maxwell slightly outside the off stump, and that has been hit towards the offside, towards the point area, and it goes for a boundary. 4 runs. So Zadran has now spent substantial time on the ground, and that reflected in this particular shot where he made his way for that particular ball by Glenn Maxwell. There was room on the offside, and he hit that particular ball towards the gully area, and the fielder just could not chase that delivery. 4 more runs get added to Ibrahim, and Afghanistan total now goes past 50. So of 63 deliveries, 52 runs have come for Afghanistan. In comes Glenn Maxwell for his 4th delivery, and no run results as the batter just pushes it towards the square leg region. Thank you very much, Sunil Landke, our scorer, for letting us know that 52 came from 63 deliveries. It's a run rate right now of 4.88, 6 runs so far. Wanting this particular pair with the experience of Rahmat Shah and Ibrahim, now that he is batting on 30, to continue and consolidate this position for Afghanistan. Maxwell, last delivery of his 3rd over. This one has been hit towards the offside, towards the cover area, and that has been fielded there by Mitchell Starc. Good fielding, and it results in 2 runs. So 6, 7, 8, 9 runs of this Maxwell over. After 3 overs, he's given away 15 runs, hasn't taken any wicket. Afghanistan, after 11 overs, at an exact run rate of 5, at 55 for the loss of Rahmanullah Gurbaz wicket. And talking about Afghanistan, today on the bench, they have Fazalhaq,
Naveen-ul-Haq is into the playing 11. And the other person on the bench, Riaz Hassan, is celebrating his birthday. Riaz Hassan is a middle order batter for Afghanistan. And he was born on this very day, 7th of November in 2002. Thank you very much, Prakash Tapasvi, our statistician. And happy birthday from Akashvani team to Riaz Hassan, the Afghanistan batter. So Australia would be happy with the first power play, 46 for the loss of 1 wicket after 10 overs. And after 11 overs, Afghanistan 55 for the loss of 1 wicket. It's good going for the Aussie bowler so far, but they would like to pick a couple of other wickets so that they can put pressure on Afghanistan batting. Pat Cummins bowling his second over. That was a good length delivery in line with the off stump, and both the batters were able to take a quick single there. Pat Cummins, the captain, introducing himself for his first over in that last over of power play. And sometimes one wonders, given the quality bowler he is, should he start the bowling with the new ball? But he's been preferring to come one down, one change, the first bowling change for most part of the World Cup. Today, it was Glenn Maxwell who was the first bowling change, and he introduced himself in the 10th over. Pat Cummins, second delivery over the wicket to Rahmat. And this has been hit towards Travis Head, who's fielding at the mid-on area. No run results. Still to come as far as Afghan batting is concerned, their skipper Hashmatullah Shahidi, who has scored 282 runs in the tournament so far. Azmatullah Omarzai, slated to come at number 5. The very experienced Mohammad Nabi, player of the match in the previous match Afghanistan played against Netherlands, picked up 3 wickets. Then there is their keeper as well, Ikram, who's done well. Cummins, third delivery, short pitch, which has been guided in the offside region towards the gully area for an easy single there. So in this tournament, Afghanistan has impressed with their batting as well. Although their main weapon today will be spin, because they've been able to retain not just the spin trio of Mujeeb, who usually opens the bowling for them, Rashid Khan, Mohammad Nabi, but they also have Noor Ahmed. So 4 spinners in Afghan side and just a single pacer, Naveen-ul-Haq today, and maybe Azmatullah, Omarzai will also be bowling few overs of medium pace. But right now it's Pat Cummins, 4th delivery, short pitch delivery on the leg, but the batter there, Ibrahim Zadran, couldn't really take advantage of it. That delivery was bowled at almost 141 km per hour. Pat Cummins is a master magician with the ball, and he is mixing his deliveries and bringing the variations in pace as well. Afghanistan, they won the toss today, and skipper Hashmatullah Shahidi had no hesitation whatsoever that they would like to bat first. 57 for the loss of Gurbaz wicket is where Afghanistan are after 11.4 overs, as Australian skipper Cummins runs into bowl the 5th delivery outside the off stump, and that has been hit towards the offside area, gully area, no run results. It is hot and humid in Mumbai, and therefore it will be challenging for the Aussie fielders who are fielding right now. Australia have got 10 points from the 7 matches that they've played so far. But the good point is that they're peaking at the right time. They lost to India in that opening match, and they lost to South Africa in their second match. And one thought, is it the same Australia that we know, 5-time ODI champions? But then last 5 matches, 5 wins. In comes Cummins, short pitch delivery down the leg side, and Ibrahim Zadran let that delivery go. So it's a dot ball, good over by Pat Cummins, gave away just the 2 singles. In 2 overs that he has bowled so far, he's given away 7 runs, yet to pick up any wicket. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So let's look at the Afghanistan journey in this World Cup so far. On the 7th of October in Dharamshala, Bangladesh beat Afghanistan by 6 wickets. India then won by 8 wickets over Afghanistan in Delhi. So those are the 2 losses. But what a turnaround Afghanistan did. When we had the first upset of this World Cup, Afghanistan won by 69 runs over defending champions England. It was one of the biggest upset in World Cup history. Mujeeb Rahman, player of the match. And then in Chennai, Afghanistan lost to the runners-up New Zealand. But since then, they've had 3 victories. Glenn Maxwell starts his fresh over. This one, a dot delivery. So Afghanistan beat Pakistan in Chennai, got the better of Sri Lanka in Pune. And Afghanistan then beat Netherlands
by 7 wickets in Lucknow. Glenn Maxwell, second delivery, flighted delivery, this time use of the step. Rahmat Shah, he has hit the ball above the bowler's head. It will be cut off by the fielder there, and it will result in a single. Thank you very much, Sunil Lange, the scorer. So the intention there by the batter was clear that they will take on Glenn Maxwell as well, and good use of feet to the spinner. Glenn Maxwell, the next delivery. He bowls his deliveries pretty fast, keeps it very tight, stump to stump line. This one has been hit towards the mid-on area, and another single gets added to Afghanistan. Total, they move to 59 runs for the loss of Gurbaz wicket, and Maxwell has given away 2 singles so far of the first 3 deliveries. Glenn Maxwell, for the 4th time in this over, saw the batsman coming out and just followed him. Another run results on the leg side. Stoinis picks up the ball and returns it back to the keeper, Josh Inglis. Afghanistan, this tournament, they've impressed with their capabilities and skills on the cricketing field. This time, Glenn Maxwell comes around the wicket, and it has been hit by the batter towards the leg side, the square leg region, for another single. Rahmat Shah is batting on 6. Ibrahim with that single moves to 33 or 42 deliveries. Ibrahim is just 21 years of age. And so many batters in this tournament, young people, young batters and bowlers have impressed. Maxwell, this last delivery has been hit back to him. So he's been keeping a tight length, has given away 4 singles in that over. In 4 overs that Glenn Maxwell has bowled so far, he's given away 19 runs, hasn't picked up any wicket. After 13 overs, Afghanistan 61 for the loss of Gurbaz wicket. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। So Afghanistan is taking on Australia today in Mumbai, and after that they'll be left with only one more match in group stage on the 10th of November, where Afghanistan will be up against South Africa in Ahmedabad. It is important for them to win today. Pat Cummins starts a fresh over. A good length delivery on the off stump has been respected by the batter Ibrahim, who's batting well on 33. And as I was telling you, a lot of young players have impressed in this tournament. That includes Ibrahim Zadran on crease right now. If you talk about New Zealand, it's Rashid, 523 runs in the series so far, and courtesy his 523 runs. New Zealand, of the 8 matches, they've won 4, lost 4, 8 points. Shaheen Afridi, age 23, has impressed with his bowling, although he gave away a lot of runs in the previous outing that one did. But on Duckworth Lewis, they end up winning that match. A short delivery by skipper Pat Cummins, beats the batter, beats the keeper, and it's 4 more runs. So welcome boundary there for Afghanistan. Pat Cummins pitching it short. The batter had no clue. It just flew. In fact, it did hit the bat. So it is his 4 runs to the batter. And these are the innovative shots of modern day cricket, where the batter keeps his eye on the ball till the last second and just glides it above the keeper for 4 runs. Good shot by Ibrahim there. Moves to 37. Afghanistan 65 for the loss of 1 wicket. Next delivery, good length delivery, inline mid stump. This time it's a dot ball. Pat Cummins leading Australia in the 2023 edition of World Cup. And some of these shots that we see in modern day cricket are absolutely fantastic. And it is not just the V in front of the wicket that the batters use, like traditionally, but also the V behind the wicket, using the pace of the bowlers, particularly the fast bowlers. Hashmat, their skipper, has scored the maximum runs for 282 in this tournament. Rahmat 270, Ibrahim 269. So with that run that he has taken, he has also now scored 270. So that's joint with the Rahmat. 2 runs come off that Pat Cummins delivery. So steadily and strongly Afghanistan is building another partnership here for the second wicket. A good effort there in the field. Glenn Maxwell stopping there and ensuring it wasn't a boundary.
Pat Cummins has given away 13 runs so far in 2.4 overs. In runs Pat Cummins. Away from us to bowl his fifth delivery. Another short ball, but this has been hit just to the close by fielder towards the gully area. Manas Labuschagne there picks up the delivery. It's a dot ball. If you talk about South Africa, 23-year-old Gerald Coetzee, he's impressed with his bowling. India, Shubman Gill, 24 years of age, 219 runs from the 6 matches that he has played so far. So a lot of young stars at this edition of World Cup who have impressed for their respective teams. And for Afghanistan, Ibrahim Zadran is one of them, batting currently at 39. He takes strike to the last delivery of Pat Cummins' third over. Pat Cummins, this one slightly outside the off stump as Ibrahim Zadran just directs that delivery towards the offside area, gully region for another easy single. That was bowled at 116 km per hour, so that was a slow delivery. 7 runs coming of that Pat Cummins over. After 3 overs, Pat Cummins has given away 14 runs, hasn't picked up any wicket. And after 14 overs, Afghanistan 68 for the loss of Rahmanullah Gurbaz wicket. So it's a partnership that's developing between Rahmat and Ibrahim. It is worth 30 runs so far of 36 deliveries. Thank you very much to our scorer Sunil Lanke. And it'll be interesting to see whether this partnership continues to build. And to tell you the ball-by-ball commentary, it's over to the Hindi commentator Dinesh Nagpal. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और सामने वाले छोर की तरफ से एक परिवर्तन है। इस टूर्नामेंट के बहुत सफल गेंदबाज एडम जाम्पा ने इस आईसीसी वर्ल्ड कप में 19 विकेट्स लिए हैं, उनके 19.16 की औसत पर, और 18.63 उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि लगभग 18 गेंद में 1 विकेट वो ले रहे हैं। और सामने उनके बैट्समैन रहेंगे, ये सूचना प्रकाश तपस्वी जी से थी। बैट्समैन सामना करेंगे इब्राहिम जादरान, जो कि काफी देर से मैदान में है, 40 रन बना चुके हैं 48 गेंदों पर। जो अफगानिस्तान के लिए एक थोड़ा सा मैं समझता हूं कि सोच का विषय होगा, वो है कि अभी रन गति 5 से ऊपर नहीं जा पा रही है। एडम जाम्पा ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट हमारी तरफ आते हुए बैटर पैड को साथ मिलाकर इसको लॉन्ग ऑफ में खेला, बहुत आसानी से 1 रन ले लिया। एडम जाम्पा, ये पहली बार देखा है हमने कि इस वर्ल्ड कप में लगातार वो काला चश्मा लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी आधुनिक क्रिकेट में काफी गेंदबाज ऐसा करते हैं। एडम जाम्पा बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, इसको फ्लिक किया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट में। जब तक इसको फील्ड करेंगे मैक्सवेल, 1 रन के साथ ही आसानी से छोर बदल लेंगे दोनों बैट्समैन। और रहमत 7 पर पहुंचे, इब्राहिम 41 रन बनाकर सामना करेंगे एडम जाम्पा के इस ओवर की अगली गेंद का। तीसरी गेंद करने आ रहे हैं एडम जाम्पा राइट आर्म ओवर द विकेट, हमारे सामने वाले छोर से आते हुए, और गेंद बहुत अच्छा शॉट, लेकिन जितना इसका उसको नतीजा मिलना चाहिए था मिल नहीं पाया। बॉलर्स बैक पुश, बॉलर को क्रॉस करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई, पर स्ट्रोक में थोड़ी जान कम थी, इसलिए लॉन्ग ऑफ पे जोश हेजलवुड ने इसको आसानी से फील्ड कर लिया। अभी तक जो 3 गेंदें फेंकी एडम जाम्पा ने, उसमें अफगानिस्तान के बैट्समैन को कोई समस्या दिखाई नहीं दी। चौथी गेंद को भी उसी तरह का स्ट्रोक जो कि पहले बैट्समैन ने खेला था, और इसको 1 रन के साथ लॉन्ग ऑफ में पैट कमिंस को फिर मेहनत करनी पड़ी। 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद देकर एडम जाम्पा, 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में, और इस बार ऑन साइड में परिवर्तन के तौर पे पैट कमिंस शॉर्ट मिड विकेट में प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर फील्ड करते हुए। 5 पिचेस यहां दिखाई दे रही हैं, जिसमें से आज बिल्कुल बीच वाली पिच इस्तेमाल की जा रही है, ये अधिकांश बाकी प्रैक्टिस पिचेस हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट एडम जाम्पा, आखिरी बार इसके ओवर में बैटर पैड को साथ मिलाकर लॉन्ग ऑफ पे पैट कमिंस को एक बार फिर मेहनत करनी पड़ी, माफ कीजिएगा जोश हेजलवुड को मेहनत करनी पड़ी। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ा। रहमत अब 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, इब्राहिम खेल रहे हैं 43 रन बनाकर, और इस ओवर की समाप्ति पर 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। सामने वाले छोर से, यानी कि माफ कीजिएगा, हमारे वाले छोर की तरफ से, कमेंटेटर बॉक्स छोर की तरफ से गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। मिशेल स्टार्क को बुलाया जा रहा है पैट कमिंस की जगह पे। पैट कमिंस खुद गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पे। इससे पहले मिशेल स्टार्क ने सामने वाले छोर की तरफ से 3 ओवर किए थे, जिसमें उन्होंने 19 रन खर्च किए थे। अब इब्राहिम जादरान 43 रन बनाकर उनका सामना करेंगे। 16वां ओवर ये शुरू हो रहा है और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसको हल्के से थर्ड मैन में हल्का सा दिशा दिखाई। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ अफगानिस्तान का 74 रन। तो अगर इस रन गति से रन अगर अफगानिस्तान बनाता रहता है तो उनका स्कोर 276 के आसपास पहुंचेगा, ऐसा स्कोर प्रिडिक्टर का अनुमान है। लेकिन निश्चित तौर से अफगानिस्तान चाहेगा कि अगर ये जो उनको सॉलिड स्टार्ट मिल गया है और अब उनके बैट्समैन कुछ रुक कर खेलने लगे हैं, इसके बाद जो आने वाली बैटिंग है वो भी काफी अच्छी है। इसलिए मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमारे से दूर जाते हुए कमेंटेटर बॉक्स छोर से 30 गज के घेरे के ऊपर से, लेकिन बैटर पैड को साथ मिलाकर फिर इस गेंद को मिड ऑन में खेला, रन नहीं मिलेगा। तेज गति से गेंद आई थी, 30 गज के घेरे के ऊपर खिलाड़ी खड़ा है। फील्ड प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग मैं समझता हूं। मैं पैट कमिंस की जो और ऑस्ट्रेलिया टीम की जो योजना है उससे बहुत प्रभावित हूं। जिस तरह से उन्होंने फंसाया जोश हेजलवुड की गेंद पे गुरबाज को। अब ऑफ साइड की फील्ड की बात करेंगे, लेकिन तब तक मिशेल स्टार्क ये गेंद डालने के लिए तैयार है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर इसको कट किया और इस शॉट के लिए जो खिलाड़ी रखा गया है 1 रन। स्टॉइनिस जब तक फील्ड करते इसको 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो हम फील्ड की बात कर रहे थे। एक डीप थर्ड मैन है जो थोड़ा सा स्क्वायर किया गया, एक डीप पॉइंट है और ये डीप पॉइंट जो है शॉर्ट पॉइंट और कवर्स इसके बीच के स्थिति में डीप पर है। ये दोनों खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर है और एक शॉर्ट मिड ऑफ है। ये 3 खिलाड़ी लगभग एक लाइन में है ऑफ साइड में। ऑन साइड की बात फिर करते हैं और इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद मिशेल स्टार्क की। ऑफ स्टंप के बाहर इसको खेलने गए थे जादरान इब्राहिम, उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें इस गेंद पे। जब तक वो कुछ स्कोर करते, सोचते, बैट आगे लाते, इतने में गेंद ने अपना काम कर दिया और जोश इंग्लिश के दस्तानों में जा थमाई, जो अब ये सोच रहे हैं कि क्या ये गेंद थोड़ी सी नजदीक अगर होती और इनके बल्ले से लग जाती। ऑन साइड की अगर बात करें तो एक डीप फाइन लेग है बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर, एक डीप मिड विकेट है इस बीच मिशेल स्टार्क और शॉर्ट मिड विकेट पर पैट कमिंस के लिए सीधा उनके हाथों में। ये अच्छी बात है मिशेल स्टार्क की कि बिल्कुल जो बैटिंग है वो फील्ड के हिसाब से कर रहे हैं और काफी समय से बहुत आक्रामक कोई स्ट्रोक देखने को मिला नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम की अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत स्टेडियम है ये। जैसा हम जानते हैं कि 35,000 के करीब लोग आ सकते हैं। इस समय जब मैच शुरू हुआ था करीब 2 बजे, उससे लगभग मैं समझता हूं 2 गुनी संख्या दर्शकों की हो चुकी है। इस बीच इसमें गेंद को निकाला है डीप पॉइंट की तरफ। ट्रेविस हेड जब तक इसको फील्ड करेंगे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 ओवर की समाप्ति पर 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. और इस बीच 16 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स इंटरवल की घोषणा कर दी गई है। लगभग 1 घंटे 10 मिनट का ये खेल पूरा हो चुका है। 1 घंटे 10 मिनट के खेल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुरबाज, रहमानुल्लाह और इब्राहिम जारदान ने शुरू की थी बैटिंग, लेकिन गुरबाज बहुत जल्दी आउट हो गए थे। पहले विकेट के लिए 38 रन की, दूसरे विकेट के लिए 38 रन की इस समय पार्टनरशिप चल रही है।
तो अमित, जो वर्तमान हालात हैं, 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 276 का आंकड़ा आ सकता है अगर इसी तरह से रन बनते रहें। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का टोटल हस्मतुल्लाह शाहिदी के दिमाग में होगा कि ये टोटल तो करना ही चाहिए? Well, the more the merrier, but certainly Afghan's keeper would be looking at close to 300 because look at the Aussie batting, and Glenn Maxwell in this tournament has already hit 140 deliveries, so the more the merrier. But certainly after 16 overs, the reality says Afghanistan 76 for the loss of Rahmanullah Gurbaz wicket. Rahmat Shah batting on 9, Ibrahim Zadran on 45. The drinks break is currently on, and we cannot just talk about this beautiful Wankhede Stadium where we are right now. The Akashvani commentary box adjacent to us is the Sunil Gavaskar box. On our right side is the Sachin Tendulkar stand, buzzing with a lot of activity. And next to Sachin Tendulkar stand is the Vijay Merchant stand. And positioned between Sachin Tendulkar stand and the Vijay Merchant pavilion is the bronze statue of Sachin Tendulkar. This statue was unveiled on the 1st of November 2023. That's the 1st of November this month. That was the eve of the India-Sri Lanka match. And the bronze statue is a life-size statue. You can't take your eyes off. It is so beautiful because it brings back all the memories that Sachin Tendulkar has given to this great nation and to the cricketing world. Remember, Sachin was the member of 2011 World Cup final that was played here between India and Sri Lanka at the historic Wankhede Stadium. And at the bronze statue, the words that are written are, and I quote, "Your batting made time stand still and India stand tall. Sachin, you are our national treasure," unquote. And alongside the statue, his career summary is also mentioned. Test matches 200, 15,921 runs, ODI 463, 18,426 runs, and the lone T20 international that he played. So that is 34,357 runs. Thank you to the sculptor Pramod Kamble because he's brought to life Sachin's timeless shot, the lofted drive. Many times he's played that. One shot that I'm reminded of is the lofted drive he played of Michael Kasparovich, the Australian pacer. And therefore the statue is very good. If you go to the left hand side from where we are, the Akashvani commentary box, you've got the Dilip Vengsarkar stand, another legendary Indian batter, Dinesh, Dilip Vengsarkar, and particularly his association with Lords is always memorable. बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि अब मुंबई की बात करें, मुंबई जो है एक बहुत अच्छा शहर है, भारत का प्रमुख कमर्शियल कैपिटल है। मुंबा देवी यहाँ की जो देवी हैं उनके नाम पर ये शहर बना है मुंबई। माया नगरी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड का गढ़ है, यहाँ फिल्में बनती हैं, बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं। परसों पृथ्वी कैफे में, पृथ्वी थिएटर में मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन उतना ही महान ये खेल की जगह है। क्रिकेटर्स की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है जहां से कि मुंबई से क्रिकेटर्स निकले हैं। लेकिन अब मुंबई की धरती पर एडम जाम्पा हमारे तरफ आते हुए सामने वाले छोर की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने उनके बैट्समैन तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को कवर्स में टैप किया। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ेगा। तो मुंबई की धरती की अगर बात करें, भारतीय वर्तमान टीम की बात करें तो रोहित शर्मा हैं, श्रेयस अय्यर हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि पुराने सुनील गावस्कर का नाम कौन नहीं जानता, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। शॉर्ट गेंद एडम जाम्पा की बैक फुट पर गए, रहमत 1 रन के लिए बहुत आसानी से जगह बनाई। एडम जाम्पा ने अब तक 8 गेंदें की हैं इस स्पेल में। अभी तक 8 गेंदों में अफगानिस्तान के बैट्समैन किसी किस्म की दिक्कत में दिखाई नहीं दिए। लेकिन एडम जाम्पा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हर समय मौका चूक देखते रहते हैं विकेट लेने का। लॉन्ग ऑन पर गई ये गेंद, आराम से इसको खेला, बहुत सहजता से खेला, 1 रन के साथ छोर बदला। 3 गेंदें 3 रन। एडम जाम्पा ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर एम्पायर से टकराए और उनका जो कोशिश थी वो बेकार गई। लॉन्ग ऑन पर फील्ड कर लिया गया मिशेल स्टार्क के द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट,
एडम जाम्पा हमारी तरफ आते हुए फ्लाइटेड गेंद लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा बहुत आसानी से। और मैं जो ये देख पा रहा हूं, अफगानिस्तान के बैट्समैन एडम जाम्पा पे कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो फ्लाइट भी कर रहे हैं तो भी उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे, सिर्फ एक एक रन बनवाने में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एडम जाम्पा को अगर एक बार मौका मिला तो वो फिर बैटिंग करनी बहुत मुश्किल कर देंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को बैटर पैड को साथ मिलाकर सामने लुढ़कती हुई गेंद को एडम जाम्पा ने खुद उठाया। फील्ड की बात करें, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर और एक लॉन्ग ऑन साइड में ये खिलाड़ी बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है, और ऑफ साइड में जो बाउंड्री के ऊपर है वो है एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप लॉन्ग ऑफ। लेकिन ना तो डीप लॉन्ग ऑफ नहीं डीप एक्स्ट्रा कवर को कोई तकलीफ हुई। ऑफ साइड में फील्ड किया गया, खेला गया इस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा। 17 ओवर की समाप्ति पर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान। मिशेल स्टार्क हमारी तरफ से नया ओवर शुरू करेंगे। सामने उनके रहेंगे रहमत शाह, जो कि 11 रन बनाकर खेल रहे हैं 17 गेंदों से। ज्यादा तेज गति से रन नहीं बन रहे हैं अभी, लेकिन मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की जो रणनीति है वो ये है कि जितना हो सके ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को थकाया जाए। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लंबे डग भरते हुए, और इस बार इस गेंद को ऑफ साइड में खेला। इसमें 2 रन होने चाहिए थे लेकिन लिया 1। मैं समझता हूं कि ये रनिंग बिटवीन द विकेट जो की है अफगानिस्तान के बैट्समैन ने, ये वाले इस शॉट पर अगर ये पहला तेज रन लेते तो ये 2 रन हो सकते थे। अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के या भारत के बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते तो निश्चित तौर से 2 रन होते। और ये अनुभव का फर्क है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे जैसे अफगानिस्तान खेलता रहेगा वैसे वैसे वो अपने आप को सुधारते रहेंगे। इस बार अफगानिस्तान को कोई भी टीम हल्के में आंक नहीं रही है। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, थर्ड मैन में इस गेंद को बहुत आसानी से खेला। जब तक इस गेंद को मिशेल स्टार्क फील्ड करेंगे 1 रन और मिलेगा। तो 1-1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है। सुनील बताइए कितना समय से चौका नहीं लगा है? तो काफी समय पहले एक चौका लगा था पैट कमिंस की गेंद पे जो स्कूप शॉट खेला गया था। मिशेल स्टार्क इस समय एक डीप फाइन लग है, डीप मिड विकेट है बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर, 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में 2 खिलाड़ी हैं, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक डीप शॉट मिड ऑन। लेग स्टंप के बाहर तेज गति की गेंद, वाइड का इशारा, नीली जो लाइन है स्टंप्स के ऊपर उसको पार करके गई। 26 गेंद पहले एक चौका लगा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 26 गेंदों में लगातार चुप रखा है। लेकिन इन 26 गेंदों में रन कितने बने हैं सुनील, यह देखने की बात होगी। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन अप है उनका, 30 गज के घेरे से भी 5 फीट के बाहर से दौड़ते हैं। काफी अच्छा स्मूथ एक्शन, लेग स्टंप के बाहर और फिर वाइड करार दी जानी चाहिए। बैट्समैन ने देखा एम्पायर की तरफ, लेकिन वहां गेंद निश्चित तौर से जो लाइन है उसके अंदर थी। तो 26 गेंदों में 18 रन बने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय अफगानिस्तान के बैट्समैन रुक कर खेल रहे हैं और निश्चित तौर से उनमें से एक किसी को प्रयास करना होगा। लेकिन मिशन एक तरफ से मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा और उससे पहले पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। तो बिल्कुल रोक के रखा है, ब्रेक लगा रखी है अफगानिस्तान की गाड़ी पे। ऑफ स्टंप के बाहर और ये हवा में थी गेंद, जोश इंग्लिश के क्लब से दस्ताने से निकलकर बाहर गिरी। 1 रन मिला मिशेल स्टार्क की इस गेंद पे। इब्राहिम बैट का किनारा था वहां पे, लेकिन गेंद बहुत बाहर थी। तो ऐसा कोई मौके जैसी इसको हम बात नहीं कह सकते। असल में विकेट कीपर के पहुंचने से पहले ही ये गेंद टप्पा खा चुकी थी, स्लोअर गेंद की थी। गति का परिवर्तन, और ये मिशेल स्टार्क की बहुत खासियत है, गति का परिवर्तन बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट लेग स्टंप के बाहर और इस बार फिर वाइड करार दी जाएगी। 2 वाइड कर दिए मिशेल स्टार्क ने इस ओवर में।
और इतने अनुभवी गेंदबाज से जिन्होंने कि इतना लंबा समय से वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने 81 मैच खेले हैं अपने देश के लिए, 126 विकेट लिए हैं और 127वें का उनको तलाश है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए लंबा रन अप है उनका, काफी लंबी दौड़ लगाते हैं और इस बार ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जोश इंग्लिश ने हवा में लपकते हुए, उछलते हुए लपकने की कोशिश की बहुत, लेकिन उनसे दूर थी और इसके साथ इब्राहिम जारदान के 50 रन पूरे। 50 रन उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं। 50 रन बनाने में उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया है और इस दौरान में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। तो इब्राहिम जादरान, ये सूचना सुनील की तरफ से। मिशेल स्टार्क, शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड, तीसरी वाइड। इब्राहिम जादरान का यह छठा अर्धशतक है और इस वर्ल्ड कप में दूसरा है। धन्यवाद प्रकाश जी, 77 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। और अब मिशेल स्टार्क की गेंद का सामना रहमत शाह कर रहे हैं। रहमत शाह बहुत आक्रामक नहीं खेल पा रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपनी पारी में कोई चौका भी नहीं लगाया है, लेकिन देखना है कि मिशेल स्टार्क इस ओवर में दिशाएं भगट रहे। ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइड, चौथी वाइड। बहुत लंबा ओवर हो रहा है। सुनील, कितनी गेंदें डाल चुके हैं अब तक ये इस ओवर में? 9 बार गेंद डाल चुके हैं, जिसमें से 4 वाइड हैं और 5 गेंदें उनकी लीगल डिलीवरीज हैं जो कि कानूनी तौर से मान्य है। तो 4 रन भी मिले और ओवर लंबा हुआ और गर्मी का समय है, इतना लंबा ओवर करना मिशेल स्टार्क को निश्चित तौर से दिक्कत हो रही होगी। अब उन्होंने लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को कवर्स में पंच किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन बहुत आसानी से इसको ट्रेविस हेड रोक लेंगे। उसको फील्ड करके थ्रो किया, बहुत अच्छा थ्रो, 2 रन के साथ ही, लेकिन स्कोर आगे बढ़ा। 18 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 93 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। एडम जाम्पा सामने वाले छोर की तरफ से अभी तक कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन इस ओवर में क्या प्रभाव डाल पाएंगे, आइए अंग्रेजी में विवरण अमित अरोड़ा से। Thank you very much, Dr. Dinesh. After 18 overs, Afghanistan 93 for the loss of 1 wicket. Adam Zampa starting a fresh over. First delivery of the third over, and the batter Rahmat Shah just taking a couple of quick steps. Hits that delivery to the offside. No run results. That was towards the point fielder. In that previous over, Starc gave away 13 runs. That included lot of wides. He's been struggling with wides initially as well, but interesting to see what approach he takes. Will he be continued by skipper on the other end? Adam Zampa bowls that next delivery and no run results. He's picked up 19 wickets so far, Adam Zampa. Second on the list in terms of the leading wicket taker, right after Sri Lankan pacer Dilshan Madhushanka, who's picked up 21 wickets. After those first 2 games, Adam Zampa has come on his own. The leg spinner now bowls the third delivery. And once again, use of step. This time the ball has been hit over the bowler's head. Hazlewood there fielding at the long off area will cut that off, and a single run results. Adam Zampa has impressed ever since that third match in this tournament and has been instrumental in the 5 successive wins that Australia has had. The partnership right now, 56 of 67 deliveries for the second wicket between Rahmat Shah and Ibrahim Zadran. In comes Adam Zampa. This one on the off stump has been hit towards the covers area. Will be fielded by Warner there, and good fielding there by Warner. He returns the ball towards the bowler's end. 1 run results. Run rate right now 5.09. Afghanistan skipper will be happy with this effort.
nearing almost 100 within 20 overs. And this partnership is critical. 57 of 68 so far. Ibrahim contributing 39, Rahmat 14, Zampa. This one in line with the middle stump has been hit back towards the bowler. No run results. So Adam Zampa, 19 wickets so far in the tournament. And in the previous match against England, contributed with the bat as well and was good in the field, taking that outstanding catch in the outfield. So overall, all-round effort against England. Adam Zampa this time on the off stump. This has been a slight misfield there on the offside at the short cover area. Manas Labuschagne couldn't get the ball in the first go. That resulted in another single. So 3 singles of that Zampa over. Zampa so far has bowled 3 overs, given away 12 runs, hasn't picked up any wicket yet. So Afghanistan cruising along nicely here, building the partnership and ensuring that they can bat out full 50 overs and come up with a competitive total to put the scoreboard pressure on Australia. Remember, Australia are 5-time ODI world champions and they're peaking at the right time. Another bowling change, it's Travis Head who's being brought into the action. Travis Head, the left-handed batter, known primarily for his batting, and scored century against New Zealand at Dharamshala. In 61 matches, he's picked up 16 wickets, so he's no mark with the ball. And sometimes they say that when you bring in part-time bowlers like Travis Head, you can often break the partnership as well. So a surprise change there by the skipper Pat Cummins, as Travis Head is going to bowl his first over. Shah on strike. He's on 15 of 25 deliveries. So he's spent some time at the ground. As far as the dimensions are concerned, on the square is 66 and 61 meters. This one has been hit towards the leg side area, mid-wicket, as easy single for Shah. Ibrahim now comes to strike. He's scored his 55 runs. He's the highest run getter for Afghanistan in this calendar year, Ibrahim Zadran. He's a young batter, 21 years of age. Travis Head now bowling to Ibrahim, which has been flicked over towards the leg side, square leg area for an easy single. So this is an interesting phase of the match where Afghanistan would like to not just retain the wickets but also increase the scoring run rate, given the part-time spinner Travis Head in operation. Another single there is something that Pat Cummins won't mind. This is the 6th bowler that Australia has used. Starc, Hazlewood, Maxwell, Cummins, Zampa and now Travis Head. The 4th delivery hit back to the bowler. Good fielding there by Travis Head of his own bowling. Bowling with the shades on. It is pretty hot and the shades do help to focus more. In terms of the field, there's a short third, cover, mid-off, and on the leg side there's a short fine leg and a mid-wicket as well. Around the wicket, Travis Head for the 5th time during this over. The ball has been hit towards the short mid-wicket area. No run results, so a dot ball. So 3 singles of the first 5 deliveries. That's a good first over by Travis Head. The last delivery of his first over around the wicket, this time to Ibrahim Zadran, and once again it's been hit towards the mid-wicket area. No run results. So a very good over, 3 runs coming off it, and Pat Cummins will be very happy. When you have a part-timer like Travis Head who can squeeze in a couple of overs, it just gives that particular margin to the skipper that if any bowler is off mark, then that gives some comfort to the skipper. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So the story so far from the Australia versus Afghanistan match here at Wankhede Stadium in Mumbai is Afghanistan skipper won the toss, decided to bat first, and Afghanistan after 20 overs are 99 runs for the loss of 1 wicket. The wicket that has been dismissed has been of Rahmanullah Gurbaz, who has scored 255 runs in the tournament so far. Ibrahim Zadran has scored 288 runs in the tournament. He's batting on 56. Right now on strike is Shah, and it'll be Adam Zampa to bowl his 4th over. The leg spinner bowling from Garware end over the wicket. First ball to Shah has been hit towards the offside area, point region, no run results. Adam Zampa bowled that delivery at 89 km/h. He does have the stock delivery, the leg break delivery, and then the occasional googly with which he does pick up wickets as well. Adam Zampa, 2nd delivery
Slightly short pitched in line with the middle stump that has been hit towards the deep point area for a single. So 100 runs come up for Afghanistan with that single. 100 runs coming off 122 deliveries. Thank you very much, scorer Sunil Lange. The first 50 came off 64 and the second 50 came off 63 deliveries. So it's almost identical in terms of the two 50s that have come from Afghanistan. And Ibrahim Zadran batting on 56 of 68 deliveries. This one was on the leg side, should have been punished, but has just been hit towards the mid-on area for a single. Glenn Maxwell there, fielding at long off, just running in to pick up that particular ball. Two singles so far of the first three deliveries. Zampa has been pretty economical in the 3.3 overs that he has bowled. In comes Zampa over the wicket from the Garware end, bowling to Rahmat Shah. This one, in line with the middle stump, has been hit towards the long on area. Once again, Glenn Maxwell coming into the picture. Another run gets added to the Afghanistan total. One day international is all about different phases of building your innings. The first 10, power play, and then consolidation phase. Zampa this time on the leg side. Ibrahim Zadran could not really hit that ball and take it to task. A dot delivery. He could have hit it towards the leg side, the square leg region, but missed out connecting with the ball. For one last time, Adam Zampa in his fourth over. This time a flighted delivery on the middle stump has been hit towards the offside, towards the cover area for another single. So 4 singles coming off the Zampa over. In his 4 overs so far, he's given away 16 runs. Hasn't picked up any wicket yet. Remember, he's one of the leading wicket takers, having picked up 19 wickets. So the 21st over comes to an end. A run rate of 4.90. Afghanistan 103 for the loss of 1 wicket. Sounds of dhol can be heard in the background as the spectators who have gathered here, they are backing their respective teams. Perhaps a little more support for the Afghanistan team, but there are people who love the Aussie kind of cricket and the consistency Australian team has shown over the decades. And it's the next over from Travis Head once again. He had given away 3 runs of his first over. That delivery has been hit towards the square leg area for an easy single. Partnership is building at 66 now of 83 deliveries. Travis Head bowling his second over. Travis Head missed out the initial part of the World Cup because of his thumb injury, but came back so strongly in Dharamshala to hit that century. Oh, this delivery by Travis Head. He's appealing to the umpire. Umpire is not interested. Australia has 1 review remaining. Will Pat Cummins take the review? Looks like it's not. They've already lost that 1 review they'd taken earlier. So Pat Cummins would like to retain that review. Travis Head comes in to bowl the third delivery. This time good use of the feet. He has hit the ball in the air. It's sailing over the bowler's head. Another boundary. First boundary for Rahmat Shah. So our scorer Sunil Lange tells us it's the first boundary for Rahmat Shah, who spent some time at the crease now. And this boundary has come after 32 deliveries. Thank you very much, Sunil Lange, for telling us that shackles had to be broken. And this one was hit towards the long off area. And Mitchell Starc had no chance whatsoever to get to that ball. Once again, Travis Head, and this time a reverse sweep was attempted. And the fielder, Mitch Marsh, is running after the ball. He does manage to stop the ball, but not before the batter run for a brace. 2 more runs get added to the Afghanistan total. A good over for Afghanistan this. Travis Head, a part-time bowler, was economical in his first over, but in the second over, Rahmat Shah realizes that they have to milk his bowling. So getting that boundary first and now another 2. This delivery of Travis Head has been hit towards the leg side area, towards the mid-wicket. Another dot ball. And this is the final delivery now. Travis Head around the wicket to Rahmat Shah has been hit towards the mid-on area for another single. So Head has given 8 runs of his second over, 11 runs of the 2 overs so far. And Afghanistan, after 22 overs, 111 for 1. And it's the Nelson figure. Dr. Dinesh, do you believe in Nelson? I definitely do not believe, but the famous English umpire
used to definitely believe it, and there have been instances जहां पे वो टेस्ट मैच में हमेशा जब भी नेल्सन आता था तो जंप करते थे. डेविड शेफर्ड. बिल्कुल बिल्कुल. Used to just jump. तो मैंने सोचा कि एक पहेली आपके लिए बुझाया जाए, लेकिन डेविड शेफर्ड हमेशा ही, और मैंने देखा है खुद उनको कमेंट्री के दौरान. तो बहुत मैं समझता हूं अमित एक इंटरेस्टिंग फेज है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह से रन बनाना चाहता है, हालांकि विकेट नहीं खो रहे, ये उनके लिए अच्छी बात है, पर अफगानिस्तान फिलहाल इनको कुछ ना कुछ तो जैसा पिछले ओवर में किया कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गेंद वरना रन आगे आगे बनाने मुश्किल हो जाएंगे. Well, like you said, from Afghanistan perspective, they've got 9 wickets in hand. Both the batters are doing very well. Captain Shahidi slated next is among runs, and now we've got Glenn Maxwell beginning the next over. राइट आर्म ओवर द विकेट. ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार माफ कीजिएगा राउंड द ओवर राउंड आने की उन्होंने फैसला किया. बैटर पैड को साथ मिलाकर बॉलर्स बाय पुश राउंड द विकेट. ग्लेन मैक्सवेल डीप मिड विकेट में खेला. एडम जाम्पा ने बहुत तेज दौड़ लगाई अपने दाईं तरफ जाते हुए, लेकिन एक रन आसानी से मिलेगा रहमत शाह को. 27 पर पहुंचे इब्राहिम 59 रन बनाकर 72 गेंदों में. 22.2 ओवर का इस समय खेल हो चुका है. तीसरी गेंद 23वें ओवर की डाली ग्लेन मैक्सवेल ने, जिसको मिड विकेट में खेला. पैट कमिंस जब तक इसको फील्ड करेंगे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. ग्लेन मैक्सवेल जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत तेजी से अपना ओवर खत्म करते हैं, और सामने वाले छोर की तरफ से लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑस्टम के बाहर की इस गेंद को बहुत आसानी से खेला. ग्लेन मैक्सवेल, एडम जाम्पा, ट्रेविस हेड वो रन जरूर 4-5 ही दे रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं. ग्लेन मैक्सवेल इस ओवर में 5वीं बार राइट आर्म राउंड द विकेट. बैटर पैड को साथ मिलाकर शॉट मिड ऑन की तरफ खेला. आराम से फील्ड कर लिया गया इसको. कोई रन नहीं, और ना ही कोई रहमत शाह और इब्राहिम जादरान ने कोशिश भी की, कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया. ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म राउंड द विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को फ्लिक किया कलाइयों के सहारे, जैसे कि एशियन सब कॉन्टिनेंट के श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं. कलाइयों के सहारे 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 ओवर की समाप्ति पर 115 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान. तो अब देखते हैं कि सामने वाले छोर की तरफ से तो ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे थे, हमारे वाले छोर की तरफ से यानी कि कमेंटेटर बॉक्स छोर की तरफ से किसको लाया जाता है. गेंदबाजी में एक परिवर्तन तो निश्चित तौर से वहां होगा. स्टॉइनिस दिख रहे हैं. स्टॉइनिस जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, ज्यादा तेज गति से गेंद करते नहीं है, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी रहती है. उन्होंने 68 मैचेस में 47 विकेट लिए हैं. 3 विकेट 16 रन देकर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. तो गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं वो. मार्कस स्टॉइनिस ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. मार्कस है उनका नाम पूरा, मार्कस स्टॉइनिस. बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं. वानखेड़े स्टेडियम पर इस समय थोड़ी सी गर्मी कम होती हुई, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य देव पश्चिम में जाएंगे हमारे दाईं ओर, अब वो अस्त होने की तैयारी में है. अरेबियन सागर की तरफ हमारे दाईं तरफ समुद्र है. राइट आर्म ओवर द विकेट स्टॉइनिस. लेग स्टंप के बाहर दिशा भटकी गेंद आ रही है. मिड विकेट में 1 रन मिलेगा बहुत आसानी से, और इस 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ जाएगा. 116 अफगानिस्तान का. स्टॉइनिस के लिए जो फील्ड रखी है वो बहुत दूर फैली हुई है. कैच लेने की स्थिति में कोई खिलाड़ी नहीं है विकेट कीपर के सिवाय. एक डीप थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट है. ये 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है. मार्कस स्टॉइनिस राइट आर्म ओवर द विकेट. बहुत अच्छा शॉट, लेकिन
सीधा फील्डर के पास, ट्रेविस हेड के पास, शॉर्ट मिड ऑन पर, जो कि 30 गज के घेरे के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे। तेज स्ट्रोक था, ओवर पिच गेंद थी, कलाइयों के सहारे इसको बहुत तेज खेला बैट्समैन ने, लेकिन वहां पर कोई मौका इसलिए नहीं बना रन का क्योंकि वो सीधा का सीधा जाकर उनसे सीधा रुका। और इस बार बॉलर्स बैक पुश, बॉलर ने खुद अपने फॉलो थ्रू में इसको फील्ड किया, हाथ से छितरा कर गेंद मिड ऑफ में आई। दोनों बैट्समैन एक बार उन्होंने सोचा कि कुछ शायद वो रन के बारे में सोचें, रहमत शाह और इब्राहिम ज़ादरान ने, लेकिन जैसे देखा कि मार्कस स्टॉइनिस बिल्कुल तैयार हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की तो वो स्टंप तुरंत गिरा देंगे और एक बैट्समैन को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में। उन्होंने कदम वापस खींचे और एक बार फिर बिल्कुल उसी गेंद की पुनरावृत्ति, बैट और पैड को साथ मिलाकर बॉलर्स बैक पुश, फिर हाथ से छितराई गेंद स्टॉइनिस के, लेकिन मिड ऑफ का फील्डर जो खुद पैट कमिंस हैं वो तैयार थे और उसने ये गेंद को फील्ड कर लिया। अच्छा ओवर डाल रहे हैं स्टॉइनिस, ज्यादा रन नहीं दिए उसने, इसमें उन्होंने एकमात्र रन दिया है तो बांध कर रखा है और ये परेशानी का सबब भी हो रहा है रहमत शाह के लिए। लेकिन स्टॉइनिस ने जो लंबाई और दिशा, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादा तेज गति के गेंदबाज नहीं है, 30 गज के घेरे से थोड़ा सा अंदर से दौड़ना शुरू करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को लॉन्ग ऑन में खेला, आराम से बहुत सहजता से 1 रन दिया। 2 रन इस ओवर से आए हैं, 117 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 ओवर के बाद अफगानिस्तान। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. तो इस बीच जो अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं उन्होंने कुछ स्थानापन्न खिलाड़ी से, सब्स्टिट्यूट प्लेयर से कुछ मंगाया। असल में ग्लव्स बदले हैं और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, गर्मी बहुत है, नमी बहुत है, ह्यूमिडिटी काफी है। इस समय भी लगभग 36 तो नहीं होगा लेकिन 33-34 के करीब टेम्परेचर है। ग्लेन मैक्सवेल राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने वाले छोर से हमारी तरफ आते हुए शॉर्ट गेंद, पहले से तेज गति की गेंद की हुई, ऑफ स्टंप के बाहर इसको हल्के से लॉन्ग ऑफ में पुश किया। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन आसानी से मिलेगा। अब जो स्कोर प्रिडिक्टर है उसके हिसाब से 295 अफगानिस्तान बना सकता है और अगर 295 अफगानिस्तान बनाता है या उससे अधिक, 300 सवा 300, तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। यह देखते हुए कि अफगानिस्तान के पास 4 उच्च कोटि के स्पिनर हैं और यह गेंद शॉर्ट गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, इसको रोक लिया जाएगा। 2 रन लेकिन आसानी से मिलेंगे। काफी खराब गेंद थी, मैं समझता हूं ग्लेन मैक्सवेल भाग्यशाली रहे, इस बार उन्होंने ओवर द विकेट आने का फैसला किया था। शॉर्ट गेंद का जितना फायदा लेना चाहिए था रहमत शाह को उतना ले नहीं पाए, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन इब्राहिम थे, लेकिन फिर भी 2 रन मिले। तो 3 रन 2 गेंदों से ग्लेन मैक्सवेल की इस ओवर में आ चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को जानबूझकर ऑन साइड में खेला। ऑन साइड में जो डीप मिड ऑन का फील्डर है वो काफी लंबा है, उससे दूर है, स्क्वायर है, उसे अपने बाईं और दौड़ लगानी पड़ी। 1 रन लेकिन आसानी से मिलेगा। अपने 6ठे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को हवा में उछालकर खेला है और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में और आउट। बहुत देर से ग्लेन मैक्सवेल फ्लाइट कर रहे थे, रहमत शाह को ललचाने की, लुभाने की कोशिश कर रहे थे और ये ऑस्ट्रेलियाई टीम का बिल्कुल मैं कहूंगा खास होमवर्क है। वो बिल्कुल उन्होंने प्लान करके, योजना करके, गेंदबाजी में कुछ खास बात नहीं थी लेकिन वो बैट्समैन की कमजोरी को भांप चुके थे, बैट्समैन की कमजोरी पे उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तभी ग्लेन मैक्सवेल बार बार राउंड द विकेट आ रहे थे जब भी रहमत शाह आ रहे थे और इब्राहिम ज़ादरान को ओवर द विकेट कर रहे थे, कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, लेकिन वो
ऐसा नहीं किसी योजना के तहत कर रहे थे, और उस योजना के तहत रहमत शाह ने बहुत सिंपल साधारण कैच थमाया। और अब हशमत जो कि कप्तान है, हशमतुल्लाह शाहिदी 71 मैच खेल चुके हैं, 2057 रन उन्होंने बनाए हैं और काफी लंबा अनुभव है। कीनिया के खिलाफ उन्होंने शारजा में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल का जहां तक सवाल है उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफ स्पिनर आमतौर पे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब रहमत शाह ही सामना करेंगे गेंदबाजी का। तो हशमत शाहिदी ने कुछ बातचीत की। हशमत शाह को एम्पायर ने कहा कि आप ही जाकर स्ट्राइक लीजिए, और अब वो एम्पायर से गार्ड ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि व्यवधान काफी लंबा है, जैसे कि बैट्समैन आए हैं तो उसके बाद थोड़ा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पानी इत्यादि लेकर आ गए, अफगानिस्तान के भी खिलाड़ियों के लिए, दूसरे खिलाड़ी के लिए, जादरान के लिए पानी लाया गया। अब फील्ड सेट कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, उसमें काफी समय ले रहे हैं और देखना है अब ये क्या गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट करेंगे या राउंड द विकेट करेंगे। जिस तरह की व्यू रचना है उससे तो लगता है कि ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करने वाले हैं। हशमत शाह को 2 गेंदों का सामना करना होगा अगर वो इस गेंद पर रन नहीं लेते। जो हशमत शाह के लिए फील्ड लगाई गई है, इसमें एक शॉर्ट थर्डमैन है, एक शॉर्ट पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप पर आती हुई ग्लेन मैक्सवेल के लिए खेला गया। हशमत शाह ने कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। हशमत शाहिदी ने, पूरा नाम हशमतुल्लाह शाहिदी है, कल उनसे बात हुई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। 1 रन के साथ ही खाता खोला कप्तान शाहिदी ने, लॉन्ग ऑफ में खेला इसको कोई दिक्कत के बिना, और दूसरा विकेट अफगानिस्तान का गिरा। मैं समझता हूं पूरी प्लानिंग और योजना के साथ 25 ओवर के बाद 122 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। तो इस तरह से 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पैट कमिंस हमारे वाले छोर की तरफ से गेंदबाजी के परिवर्तन के तौर पर ट्रेविस हेड की जगह पर वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, हशमत शाहिदी को अमित अरोड़ा। Thank you very much, Dr. Dinesh. So it's skipper bowling to skipper. This time all around the wicket, in fact, and that was a short delivery. Hashmat Shahidi just lets that delivery go to the keeper. No run results. So the second wicket that fell for Afghanistan was Rahmat Shah, and he was disappointed with that particular shot that he played because he was well settled. He had made 30 of 44 deliveries, a cautious 30 he had made, just 1/4 of it, but good bowling effort by Maxwell, getting rid of Rahmat Shah. That has brought the skipper onto the crease, who now faces the next delivery. Another short ball, this time it's been hit towards the leg side area, just pulled it towards the square leg area for a single before Starc could pick up that delivery and throw it back to the keeper. Hashmat Shahidi now moves to 2. He has already scored 282 runs so far in the tournament. That includes 350, so he's been in form as far as batting is concerned, and after him it's Azmat, Nabi, Ikram and Rashid still to go. So Afghanistan does have the batting depth, and as far as Australia is concerned, they've used 7 bowlers: Starc, Hazlewood, Maxwell, Cummins, Zampa, Head and Stoinis. Right now it's skipper Cummins bowling his 4th over. This one, a good length delivery in line with the off stump, has been hit towards the close by fielder in the short cover area. No run results. So Cummins, 3 deliveries in this 4th over of his, has given away a single run. Skipper has bowled a good line and length, Pat Cummins. Starc has been a spot of concern in the first spell that he bowled today of 3 overs. Didn't bowl any extra, but when he was brought on again for the second spell, he gave away too many wides, and that forced skipper to bring in Travis at first, then Stoinis to cover up some of the overs. In comes Cummins, a good length delivery once again in line with the off stump that has been hit towards the point region.
And we've got the fielder there, Sean Abbott, who is the substitute fielder. He's a good fielder and restricting that particular shot to just 1 run. So 2 singles so far from the first 4 deliveries. Pat Cummins is keeping it tight, and skipper Hashmat and Ibrahim would want not just to stitch a partnership but also accelerate that run rate, which currently is at 4.83. This is the 26th over in progress for the Afghanistan innings. They have made 124 runs and they have lost the wicket of Gurbaz and Rahmat Shah. Ibrahim Zadran, the other opener, batting well on 66 of 81 deliveries. Hashmatullah Shahidi, who's just come in at the fall of second wicket. He's batting on 2, having a closer look on the fielding arrangements. He's ready to face Pat Cummins. Around the wicket this time. Short delivery. And Hashmat lets it go to the keeper. So a dot ball. Clearly Pat Cummins and company have the recipe of short ball to the Afghan batters and checking their ability to cut or pull. And every dot ball does add to the pressure. The first wicket put up 38 run partnership of 48 deliveries, and the second wicket of 83 run partnership of 100 deliveries as Cummins bowls this one on the pads of Hashmatullah Shahidi, who hits it towards the gully fielder Marsh. No run results. That ball did have a speed of 143 km/h. So Pat Cummins, a very good over comes to an end, just giving away 2 singles. In 4 overs so far, Pat Cummins has given away 16 runs, hasn't picked up any wicket. And Afghanistan 124 for the loss of 2 wickets after 26 overs. So that partnership figure of 38 for the first and 83 for the second wicket. Thank you very much to our scorer Naveen-ul-Haq for helping us with those partnership stats. Afghanistan would certainly like to build a competitive total. You can have a look at the other matches that have happened in Wankhede. On Saturday 21st of October, South Africa beat England at this venue by a whopping 229 runs. South Africa batting first had made 399 for the loss of 7 wickets. In comes Glenn Maxwell with his first delivery on the middle, and leg has been hit towards the long off area. And before Mitchell Starc could field and send it back to the bowling end, 1 run results. And in reply, England scored 170. They were all out for 22 overs. So certainly under lights there is some movement of the ball. But as far as Afghanistan is concerned, they only have 1 pacer with them, Naveen-ul-Haq, and the part-time pace of Omarzai. But primarily they have 4 spin attacks. So it'll be interesting to see how they bowl in the second innings. But right now it's Glenn Maxwell bowling his 7th over. Has given away 29 runs, picked up the wicket of Rahmat Shah in the previous over. Maxwell around the wicket this time. A flighty delivery on the pads of the skipper Hashmat, who easily hits it towards the leg side area for a single. So 2 singles of the first 2 deliveries. Glenn Maxwell coming into bowl over the wicket, this time to Ibrahim Zadran, who hits it back to the bowler. No run results, a dot ball. Ibrahim Zadran has scored 299 runs in this tournament, and with a single he'll complete 300. Just 21 years of age. Surely he's going to be serving Afghan batting for long. 5th delivery of the 27th over. Glenn Maxwell bowling a stump to stump line, again has been hit back to the bowler. No run results. Glenn Maxwell bowled that delivery at 91 km/h, and he comes in for the last time of this over. Again in line with the off stump. This has been driven towards the offside, towards the covers area, and 2 run results on that last delivery of Maxwell's 7th over. Buckle up, so fellow 4 runs space of this enthusiasts, because we're about to uncover the celestial secrets that have been unveiled this year. From giant stars to the organic second time that happened at this venue was on the 24th of October. South Africa again. This time they were up against Bangladesh, and South Africa won by an overwhelming margin of 149 runs. This was a Quinton de Kock show. 174 coming off his bat. 382 for 5 is what South Africa amassed, and Bangladesh could manage only 233 before getting all out. So the sides who batted first, they've scored 399, 382, and when India met Sri Lanka at this venue on the 2nd of November, India
scored 357 for 8. Shubman Gill scored 92. Virat got a half century. So did Shreyas Iyer. And Sri Lanka could manage only 55. So batting first here, Afghanistan taking a cue from those 350 plus scores for the first 3 matches they were played at Wankhede. Would certainly like to hit that 300 figure mark. In comes Cummins to bowl his 5th over. Short pitch delivery straight away. And Hashmatullah Shahidi says, thank you very much. Just ducks down and lets the ball go to Josh English gloves. No run results. Pat Cummins very clear with his strategy here. Now Hashmatullah Shahidi and Ibrahim Zadran at the centre of the pitch. Exchange of words, deciding what should be the strategy. Because continuously we are seeing the Aussie bowlers bowling short balls. And the idea will be to connect that ball and play some pull or a cut shot. Once again, Pat Cummins around the wicket. Once again a short delivery. This time the batter attempts a shot. The keeper could not field it. It goes to the boundary. 4 runs. Signals the umpire. Welcome boundary that for Afghanistan. Hashmatullah with that boundary moves to 7. This was a short delivery. This time Hashmatullah decided not to duck but to play and was able to get some connection with the delivery. Yes, he did. And it flew off past the keeper for 4 runs. Pat Cummins. Will he go for a 3rd short ball in succession? Pat Cummins running away from us. And this one was a good delivery. A dot ball going into the gloves of Josh English, the keeper. Mitch Marsh is also another option who Pat Cummins could rely on for a couple of overs. Marcus Stoinis is bowled as well. So has Travis Head. Not sure whether Mitchell Starc today will be completing his full quota, given that in 1 over he bowled 4 wides. Pat Cummins, 4th delivery of his over, running away from us around the wicket to skipper Hashmatullah Shahidi. Over pitch delivery. This has been hit towards the offside area. And the fielder there at the covers, Glenn Maxwell, fielding that. Marnus Labuschagne is at the backward point. Mitch Marsh has short fine leg. Travis Head at mid-wicket. Adam Zampa is fielding at the mid-on. So 3 dot deliveries in the first 4 deliveries. And the second one was hit for a 4 towards the fine leg area. In comes Pat Cummins for the 5th delivery this time. Running away from us around the wicket to Shahidi, who just taps it towards the offside area, gully area. Marnus Labuschagne bouncing on that delivery and no run results. Afghanistan would like to give a competitive challenge here now that they are batting first. It was a good toss to win for the Afghan skipper, and he did say during that toss that the wicket looks good, and in the second innings they could get some assistance from spin. So if they want their 4 spinners to weave a trap around the Aussie batters, they would like to score good total here. Pat Cummins, another short ball straying on the leg side area. It has been hit towards the square leg region for another single. So Pat Cummins completes his 5th over, gave away 5 runs in that. Overall he's given away 21 runs so far, hasn't picked up any wicket. And after 28 overs, Afghanistan 133 for the loss of 2 wickets. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So at this current rate, which is 4.75, the score predictor says Afghanistan would reach about 238. That is not what they'll aim at. At 6 and over, they'll reach 265. And at 8 and over, they'll be getting to about 309. Dr. Dinesh, do you think that 300 is the figure that the skipper Hashmatullah Shahidi will have on his mind? Because look at how South Africa scored 399, 382, India scored 357, batting first on this very wicket. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. 300 से ऊपर का, और अब तो जो हालात है वो सोच भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा संभव है और बिल्कुल कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक टारगेट देंगे उतना ही उनके स्पिनर्स के लिए और मौका मिलेगा. ग्लेन मैक्सवेल को जिस तरह से स्पिन कर रहे हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत असर नहीं डाला. लेकिन एक बात ये समझ में आई है इस पिच पे अमित, कि अगर जो स्पिनर अपनी लाइन और लेंथ सही जगह पे डालने की कोशिश करेगा और लगातार उसको
बना के रखेगा वो निश्चित तौर से यहां पे असर डालेगा. Absolutely, and Glenn Maxwell has done that. He's been very economical, 7.3 overs so far, given away 34 runs. That ball was also hit for a single. Singles won't be of much concern for Maxwell or Pat Cummins. So far, Afghanistan in their innings have played 83 dot deliveries, taken 68 singles. Glenn Maxwell around the wicket this time to skipper Hashmat, who just hits it back to the bowler. Hashmatullah Shahidi is now on 9 of 16 deliveries. Ibrahim 70 of 87 deliveries. Glenn Maxwell once again around the wicket, and that has been hit for a quick single before the fielder Adam Zampa can get to the ball and hit it back to the wicket-keeper Josh Inglis. Hashmatullah, Omarzai, Mohammad, Nabi, Ikram, Alikhil. The wicket-keeper batter has also been very impressive in this tournament. Once again, Glenn Maxwell tossing up the delivery, and the batter there, Ibrahim, hitting it back to the bowler. No run result. So after 29 overs, it's 136 for 2. 29 overs up, the score is 136 for 2. Afghanistan won the toss today, elected to bat first. Australia so far, Mitchell Starc 5 overs, 35 runs, no wickets, so that's an economy of 7. Hazlewood bowled his 4 overs very economically for 16, picked up the first wicket of Gurbaz. Glenn Maxwell has bowled 8 overs, 34 runs. He's picked up the wicket of Shah. That's an economy of 4.25. Captain Cummins has bowled 5 overs, given away 21 runs. Zampa so far has bowled 4 overs, given away 16 runs, an economy of 4. Travis Head squeezed in a couple of overs, giving away 11 runs. And so far, Stoinis has bowled just a solitary over, gave away 2 runs. The first wicket fell at 38, and that was Rahmanullah Gurbaz. And the second wicket fell at 121, that was Rahmat Shah. And from 121 to 2, it's now 136 for 2. So these two have added 15 runs. Hashmat on 9, Ibrahim on 70, and Josh Hazlewood is being brought back. This will be his 5th over. He's been impressive of all the bowlers. 16 runs is what he has given. Picked up 1 wicket of Gurbaz. Running away from us, Josh Hazlewood over the wicket on the leg side this time, and lucky that was not given as a wide by the umpire. So it's a dot delivery. The pad did come in the way, so therefore it's a dot delivery. Last 43 balls, Afghanistan has scored 25 runs, and they've just had 1 hit to the fence, 1-4, and they've lost 1 wicket as well. So it's a very consolidation kind of phase where Aussie bowlers aren't giving any loose balls to the Afghan batters to hit. Once again, Josh Hazlewood over the wicket, and this time Hashmatullah Shahidi uses his feet, hits it hard towards the leg side region, and the fielder there at mid-on. Slight misfield there from Travis Head results in 2 runs. So 2 runs get added to the Afghan total. Looks like between the two, Hashmatullah Shahidi wants to hit the ball Buckle on the up, beret. fellow If there space is the ball to be hit, because we're about to uncover he's showing the the celestial intent secrets that of have been putting the paddle on the accelerator, because with the good foundation that they've got so far, 138 for 2, and we're into the 30th over, they would like to accelerate the strike rate from here. Once again, Josh Hazlewood around the wicket, short pitch delivery to the skipper, who just hits it towards the square leg area for another single. That delivery bowled by Josh Hazlewood was at 132 km/h. Hazlewood hasn't quite performed in this tournament in terms of picking up the wickets. He's set high standards for himself. Afghanistan innings so far has been punctuated by 10 fours, no 6 so far. And the spectators who've gathered here at the Wankhede would certainly cheer when that first 6 happens sooner than later. Josh Hazlewood once again from the media box, running away from us to bowl his 4th delivery of the 5th over. This one outside the off stump, and that has been hit towards the offside, towards the deep third area, and 1 run will result. This year. From giant stars to organic molecules, Hazlewood, who shares the new ball with Mitchell Starc. Mitchell Starc over the last 2-3 matches has struggled and has really bowled a lot of wides. Today, when he was brought back for the second spell, again struggled with wides, and that's why
Pat Cummins brought in Travis Head. Josh Hazlewood, 5th delivery around the wicket, a good length delivery that has been hit towards the leg side for a quick single. Hashmat on 13, Ibrahim Zadran 71. So it's a good innings that Ibrahim Zadran is building. He's looked confident from the word get-go. It's a risk-free batting that he has done, confident of the strokes that he has played. And if you look at the entire wagon wheel of Ibrahim Zadran, you'll realize that majority percentage of his 71 runs have come behind the wicket. So in modern day cricket, a lot of strokes are played behind the wicket. This one has been hit towards the covers. Will they run for the second? They feel that they are coming on the ball very fast, so that will restrict only to a single. So 1, 2 and 4 singles. That's 6 runs coming off the Josh Hazlewood 5th over. In 5 overs that Hazlewood has bowled so far, he's given away 22 runs. He's picked up 1 wicket of Rahmanullah Gurbaz. Gurbaz was caught by Starc off the bowling of Hazlewood. He made 21 of 25 deliveries. Shah was caught by Hazlewood. So Hazlewood coming and contributing in both the wickets. Off the bowling of Maxwell, 30 or 44 deliveries. Ibrahim batting on 72, Hashmat batting on 13, Azmat, Nabi, Ikram, Rashid, Mujeeb, Naveen and Noor. That's the batting lineup for Afghanistan. 30 overs completed. Afghanistan 142 for the loss of 2 wickets. Run rate of 4.73. And to continue ball by ball commentary, it's over to my Hindi commentator, Dr. Dinesh Nagpal. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैदान पर लगातार बहुत जो है अच्छा जोशीला संगीत चलाकर जितने दर्शक आए हुए हैं, अब दर्शक लगातार जहां पर हमारी निगाह जा रही है, बहुत कम जो स्टैंड्स हैं ऐसे हैं जहां जो खाली हैं. काफी बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं. हमारे दाईं तरफ जो स्टैंड है सचिन तेंदुलकर स्टैंड, वहां तो लगभग पूरा भरा हुआ है. और हमारे बाईं और जो स्टैंड है वो भी काफी भरा हुआ है. because we're about to uncover the celestial secrets that have been unveiled this year. काफी सारी सीट्स From giant stars to और organic इस बीच ये molecules. गेंद जा रही है This बाउंड्री year- लाइन के बाहर. एडम जाम्पा ने नए स्पेल की शुरुआत की. मैक्सवेल की जगह पर उनको लाया गया और जादरान ने उनका स्वागत किया. और उनकी एक तरह से जो बहुत देर से गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, उनकी सुस्ती या उनको एक नींद से जगा दिया. राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद थी, कवर्स के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट, 4 रन. एडम जाम्पा एक बार फिर, और इस बार लेकिन बहुत अच्छी गेंद एडम जाम्पा ने, कोई मौका नहीं दिया. बैटर पैड को साथ मिलाया इब्राहिम जादरान ने. बॉलर्स बैक पुश, बहुत खुली हुई फील्ड है उनके लिए, एडम जाम्पा के लिए. मिड विकेट है बाउंड्री के ऊपर, डीप मिड ऑन है बाउंड्री के ऊपर, बल्कि लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर है. और इस बार कवर्स में गेंद गई, उसको फील्ड करने के प्रयास में फील्डर ने उनके हाथ से गेंद टकराकर मार्कस स्टॉइनिस थे, लबुशेन थे, मार्नस लबुशेन, और मिसफील्ड हुआ. 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ. अब एडम जाम्पा के सामने पहली बार हशमत शाहिदी, कप्तान अफगानिस्तान के, इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन भी ठीक रहा है. बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है. एडम जाम्पा वो राउंड द विकेट नहीं आ रहे हैं, वो हमेशा ओवर द विकेट ही करते हैं. और ये बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए भी ओवर द विकेट गेंद की उन्होंने, बैटर पैड को साथ मिलाया. एडम जाम्पा की गेंदों को समझना चाहेंगे शाहिदी बिल्कुल चाहेंगे कि क्योंकि एडम जाम्पा 19 विकेट ले चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. तो एडम जाम्पा के सामने कोई मौका ऐसा किसी तरह का स्ट्रोक नहीं खेलेंगे. हसमत शाहिदी लेग स्टंप के बाहर, वाइड करार दिया गया. एडम जाम्पा बहुत कम वाइड कब करते हैं, लेकिन इस बार ये जो है गेंद लेग ब्रेक थी, गुगली हुई बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी. जोश इंग्लिश ने गैदर किया, स्टंप्स गिरा दिए, लेकिन गेंद बिल्कुल वाइड थी. इस बीच हशमत शाह के साथ कुछ बातचीत, शाहिदी के साथ कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं जादरान जो काफी समय से बैटिंग कर रहे हैं और उनको काफी अच्छा अनुभव है, 26 मैच खेल चुके हैं. तो वो शाहिदी से उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने कुछ निश्चित तौर से
एडम जाम्पा जिस तरह की गेंद कर रहे हैं, जिस तरह का पिच बर्ताव कर रहा है, उसमें कुछ उन्होंने देखा है। और अब एडम जाम्पा तैयार है। कुछ थोड़ा सा एक व्यवधान है खेल में। और एक एम्पायर की तरफ से दरअसल में स्टंपिंग रेफरल दिया जा रहा है, लेकिन कोई खतरे जैसी बात है नहीं, क्योंकि पांव बिल्कुल पूरी तरह से शाहिदी का, हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान का जमा हुआ था। राइट आर्म ओवर द विकेट, एडम जाम्पा तैयार होते हुए। नॉट आउट का इशारा एम्पायर ने रेफरल मांगा था, लेकिन नॉट आउट है और वाइड तो करार दी गई थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, एडम जाम्पा, फ्लाइटेड गेंद, बॉलर सर के ऊपर से उठाकर 4 रन के लिए गेंद जानी चाहिए, बिल्कुल गई। बहुत अच्छा प्रयास वहां पर लॉन्ग ऑन पर किया था फील्डर ने। जोश हेजलवुड ने लंबी दौड़ लगाई थी और अंतिम समय पर उन्होंने अपने आप को गेंद के ऊपर गिरा भी दिया, लेकिन गेंद उनसे बहुत तेज निकली। गेंद के पांव, गेंद की जो गति थी वो हेजलवुड से बहुत ज्यादा थी और 4 रन के साथ ही शाहिदी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीसरा ये जो है 50 रन पूरे हो चुके हैं और 58 गेंदों में ये 50 रन बने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर शॉट गेंद, और ये गेंद फिर बाउंड्री की तरफ आ रही है, लेकिन इस बार प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी। मिशेल स्टार्क ने इस गेंद को आसानी से, स्टॉइनिस थे वहां पे पॉइंट पे, आसानी से फील्ड कर लिया। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ा। जाम्पा का अगर ये बात करें तो ओवर महंगा साबित हुआ है, काफी रन इसमें उनको खर्चने पड़े हैं। 153 रन 2 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान। जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। तो 11 रन खर्चे एडम जाम्पा ने। जोश हेजलवुड, नए ओवर की शुरुआत, हमसे दूर जाते हुए कमेंटेटर बॉक्स छोर के इस तरफ से राइट आर्म राउंड द विकेट, घूम कर मारा इसको। स्टॉइनिस ने फील्ड किया, 1 रन मिलेगा शाहिदी को, कप्तान को, जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। 71 मैचेस में 2057 रन बना चुके हैं, 19 अर्धशतक उनके नाम हैं, लेकिन शतक लगाना भी शेष है। भारत के खिलाफ 80 रन बनाए थे उन्होंने दिल्ली में। आज देखना है कि क्या करते हैं। 154 रन 2 विकेट के नुकसान पर 32वां ओवर ये चल रहा है। जोश हेजलवुड, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार इब्राहिम जादरान के लिए, जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन है। बैटर पैड को साथ मिलाकर कवर्स में इसको खेला, पैट कमिंस ने फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी जो है अभी तक साझेदारी कर रहे हैं, बहुत तेजी से रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया है। हेजलवुड हमसे दूर जाते हुए 30 गज के घेरे के ऊपर से दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बैटर पैड को साथ मिलाकर मजबूर किया इब्राहिम जादरान को कि उनके पास कोई मौका नहीं था। शॉट मिड ऑन में खेला, ट्रेविस हेड ने इसको फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं बनेगा। पिछला ओवर काफी महंगा रहा ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से अगर बात करें तो, 11 रन गए उसमें एडम जाम्पा के, लेकिन इस बार जो ओवर हेजलवुड डाल रहे हैं उसमें 3 गेंदों में कम से कम अभी तक उन्होंने 1 ही रन दिया है। अब देखना है कि इस गेंद पर क्या करते हैं जादरान। ऑफ स्टंप के बाहर, बैटर पैड को साथ मिलाया, मिसफील्ड हुई वहां पे लबुशेन से, और उस मिसफील्ड के कारण 1 रन मिला। तो ये दूसरा रन इस ओवर में आ गया है। तो हेजलवुड की एक खासियत है, वो बैट्समैन को शांत रखने में सक्षम रहते हैं। 6 बजे के करीब करीब सूर्य अस्त होना चाहिए, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले ही कृत्रिम रोशनी का इंतजाम शुरू कर दिया गया है और कृत्रिम रोशनी अब जला दी गई है ताकि
बैट्समैन को और गेंदबाज को किसी तरह का स्विच या तकलीफ ना हो। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार जो ये लाइटों का या इसका खेल शुरू हुआ है, धूप छांव, और वो धूप छांव ने निश्चित तौर से शाहिदी की जो एकाग्रता है उस पर भंग किया उसको। ऑफ स्टंप के बाहर हेजलवुड की इस गेंद को खेलने गए थे, कहीं आसपास नहीं थे, उनको कुछ समझ नहीं आया, बाकी का काम जोश इंग्लिश। हेजलवुड लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, घूम के मारना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को, और अगर कहीं बल्ला लग जाता तो कोई ना कोई वहां समस्या हो सकती थी शाहिदी को, कप्तान को। 32 ओवर 155 रन 2 विकेट के नुकसान पे। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. सामने वाले छोर की तरफ से एडम जाम्पा गेंदबाजी करेंगे और सामने उनके होंगे इब्राहिम जादरान। एडम जाम्पा के लिए जो फील्ड रखा गया है उसमें ऑब्वियसली या स्वाभाविक है कि विकेट कीपर विकेट से बिल्कुल चिपके हुए। आधुनिक क्रिकेट में स्पिनर्स पे जो विकेट कीपर है वो आमतौर पे हेलमेट डालकर विकेट कीपिंग करते हैं, और जब भी फास्ट बॉलर आते हैं तो वो चूंकि दूर होते हैं क्योंकि आजकल स्पिनर्स भी काफी तेज गति से गेंद करते हैं। बैटर पैड को साथ मिलाकर बॉलर्स बैक पुश। एडम जाम्पा ने नए ओवर की शुरुआत बेहतर गेंद से की, पिछला ओवर काफी खराब किया था। शॉर्ट थर्ड मैन पे हैं ट्रेविस हेड, पैट कमिंस दिखाई दे रहे हैं, जोश हेजलवुड दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा फाइन है, स्क्वायर कर कह सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद। एडम जाम्पा इस ओवर में कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह का जादरान के लिए कि वो कुछ कर पाए। 2 गेंदें, कोई रन नहीं। एक शॉट मिड ऑफ है, डीप कवर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है, और एक लॉन्ग ऑफ है वो भी बाउंड्री के ऊपर है। ऑन साइड पे डीप मिड विकेट है बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर, लॉन्ग ऑन है वो भी बाउंड्री के ऊपर है। एक शॉट मिड विकेट से थोड़ा सा हटकर एक पोजीशन है अलग तरह की, वहां पे एक फील्डर है, लेकिन ये गेंद गई उसके समानांतर खड़े हुए शॉट मिड ऑफ पे, और शॉट मिड ऑफ ने इसको आसानी से फील्ड कर लिया। इस ओवर में एडम जाम्पा ने अपने विचारों को दोबारा टटोला है, संजोया है, और बहुत अच्छे नियंत्रण से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद। एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन चौथी गेंद के बाद, ये चौथी गेंद पे पहला रन जादरान बना पाए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडम जाम्पा ने पिछला एक महंगा ओवर दिया तो उसकी भरपाई की। अब हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान, बाएं हाथ के बैट्समैन, कोई फील्ड में परिवर्तन नहीं है, जो फील्डर थे उसी तरह से रखे गए हैं। और बहुत अच्छी गेंद एडम जाम्पा की, लॉन्ग ऑन पे खेला, लेकिन एक रन भी मिलेगा, पर बहुत आराम की स्थिति में निश्चित तौर से वहां पर शाहिदी नहीं थे। अंतिम बार इस ओवर में एडम जाम्पा राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने वाले छोर से, पेविलियन एंड से, गरवारे पेविलियन एंड से हमारी तरफ आते हुए छोटा सा रनअप है उनका। शॉर्ट गेंद, और गेंद हवा में थी लेकिन टप्पा खा गई थी, और इस तरह से कोई वहां दिक्कत नहीं हुई। 33 ओवर के बाद 157 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बीच ड्रिंक्स इंटरवल की घोषणा की गई है एम्पायर्स के द्वारा। अब तक जो अफगानिस्तान की पारी में घटा है, अमित अरोड़ा आपसे उसकी चर्चा करेंगे और हम भी बातचीत करते रहेंगे। Thank you much, Dr. Dinesh. So, after 33 overs, Afghanistan 157 for 2. Rahmanullah Gurbaz was the first wicket to have fallen, caught by Starc of Hazlewood. He scored 21. Shah was the second Afghan batter to be dismissed, caught by Hazlewood of the bowling of Maxwell. Rahmat contributed 30. Ibrahim Zadran is batting very well.
He scored 79. He's faced 101 deliveries. And skipper Hashmat is batting on 20 of 28 deliveries. That's the Afghanistan scorecard after 33 overs. They had won the toss this morning and had no hesitation to bat first. And the current partnership between Ibrahim and Hashmat is worth 36 runs, score of 50 deliveries. Thank you very much to our scorer Sunil Nanke. And it's a very interesting atmosphere right now at the Wankhede Stadium in Mumbai. When we look towards the sky, we see the setting sun, but also we see the lights that have been turned on, and that is done so that there is a seamless transition into the evening. It is nearing 4:30, but some of the lights are already on. There are 4 huge stars, and when you sit on the Marine Drive, you can see these lights, and that tells you that the match is on at the historic Wankhede. Established in 1974, this is a historic ground. And you talk about Wankhede, the first recollection that you have is that 6 that Dhoni hit and that ensured the World Cup win for India. So what an effort that was by the Indian team in 2011. A tribute to Sachin Tendulkar. And since then, it's been 12 years and the dream is still on. Can we have the hat-trick of World Cup? But with 8 wins so far of 8 matches, certainly that dream is coming to reality. India already assured of the semi-final berth, and they will also end up at number 1 in terms of the round-robin stage. The question is, who will be the other teams in the semi-final? South Africa is also qualified, and number 3 and number 4 are still up for grabs. If Australia were to win today against Afghanistan, they will confirm their ticket to semi-finals. As I look at the giant screen, it is also showing the innings timer. So the Australian bowlers are doing very well. They are 2 overs ahead. So that is primarily because of the bowling of Glenn Maxwell. And maybe when Pat Cummins brought in Travis Head, not just as a cover to Mitchell Starc because he was giving away wides at that point of time, it also gives you that advantage because now with 2 overs ahead, they have time. Remember yesterday, Dr. Dinesh, we had the history being created. Angelo Matthews, how many times in quiz now that question will be asked? One can continue to debate over weeks and months whether it was right or wrong, but Angelo Matthews became the first international cricketer to be dismissed the way he was, timed out. लेकिन देखिए, हालांकि इस पे इतराज कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी, एंजेलो मैथ्यूज कह रहे कि ऐसा जो ठीक नहीं था, 4th एम्पायर का निर्णय गलत था, लेकिन जो खेल के नियम हैं वो नियम सबके लिए बराबर है और अगर किसी ने पहले नहीं किया अपील, कभी कोई बैट्समैन लेट हो गया आने में, क्योंकि समय की मर्यादा, समय की जो सीमा है वो हमें सबको ध्यान रखनी होती है. Right, well, time now says that Josh Hazlewood is ready after drinks. The first ball around the wicket to skipper Hashmat, who just hits it to the nearby fielder on the leg side. No run results. Afghanistan resuming from 157 for the loss of 2 wickets. Yes, that timed out dismissal will be debated for a long time. Is it right per the law? Is it in spirit of the game? Bangladesh went on to win that match from Sri Lanka, so that has sparked the debate. Had Sri Lanka won, maybe it would have not got too much of fire, but that was the drama that unfolded yesterday in the capital city of Delhi. Josh Hazlewood, second delivery of his 7th over, around the wicket to skipper Hashmat, who hits it towards the offside area, gully region, no run results. The Australian fielding in this match has been good, barring those first 2 matches which they lost, where in the second match against South Africa they had almost dropped half a dozen catches. Australian fielding has been good over the last 5 matches. And we do see Mitchell Starc warming up. Looks like after this over from Josh Hazlewood, Mitchell Starc would be brought back into action as well. Leave aside those wides that he is struggling in, nothing can be taken away from Mitchell Starc. What a wonderful bowler he is, alongside Josh Hazlewood. Hazlewood for the 3rd time. Short pitch delivery once again to Hashmatullah Shahidi, who this time was able to connect it very nicely and hits it towards the square leg region for a single. So certainly the plan of Australian bowlers is to bowl short to the Afghanistan batters, particularly their skipper. So no longer can you dodge these short balls, you'll have to play them. Hashmatullah Shahidi with that single moves to 21 of 31 deliveries. Was not entirely in control of that particular shot, but still managed to get a single. Ibrahim has looked very solid at the other end, although he's taken a lot of deliveries, 79 of 101. And he would certainly like to complete his century. At the same time, make sure that the strike rate is also taken into
account. This one was a good delivery, a good length delivery. Wanted to heave it towards the mid-wicket area. Did not connect that delivery. Ibrahim Zadran would be disappointed that he could not connect with that delivery. So a dot ball results. Hazlewood has given away just a solitary run in the first 4 deliveries. And that was the 100th dot ball. 100th dot ball in 202 balls. So Afghanistan won't be very happy with that high percentage of dot balls, because ODI cricket is not just about 4s and 6s. It's about taking that singles and doubles as well. Rotation of strike is always a fundamental principle, particularly in ODI cricket. This time over the wicket, Josh Hazlewood to Ibrahim, who just hits the ball back to the bowler, no run result. That ball was bowled at 134 km per hour. Hazlewood has been very economical from the very first over, hasn't really strayed and given away extras as well, unlike Mitchell Starc. And Hazlewood has picked up that first wicket that he picked of Gurbaz. So overall he's done very well. Can he pick up another wicket here and break this partnership between skipper Hashmat and Ibrahim? Once again, last delivery of the 7th over of Josh Hazlewood. Over the wicket to Ibrahim Zadran, who hits it towards the offside area, and that goes to the gully region for another single. So 2 singles from Hazlewood over. Hazlewood so far has bowled 7 overs, given away 26 runs, picked up 1 wicket. Afghanistan after 34 overs, 159 for the loss of 2 wickets. In between overs, music is played here. And you can hear the sounds of dole also in the background, and that just pumps up the entire atmosphere. And with the sun setting and with the breeze that we can associate with the Arabian Sea, it's going to be very pleasant here in Mumbai. Mumbai, they say, is a very resilient city that never sleeps. Always some of the other action happens here, and who can ever forget all the cuisines that you get to eat, particularly the vada pav. So amidst all the beautiful colours of the city, the cricketing action is happening, and Adam Zampa starts his 7th over. That was outside the leg side, surely a wide. And will they get next to a run as well? Yes, they do. They run 1 run. So that's a wide. Adam Zampa there, bowling at the speed of 95 km per hour, but straying on the leg side. And the batter didn't had any opportunity to, didn't even try to attempt to touch that ball. Adam Zampa overall in this particular tournament has been very impressive, barring the first 2 games, ever since he's picked up 19 wickets, but wicketless so far. This time over the wicket to Hashmat, who hits the ball back to the bowler, and Adam Zampa again coming back to bowl the next delivery of his over, which will be the second legitimate delivery. He's given away 31 runs so far, and quite uncharacteristic of Zampa, hasn't picked up any wickets, but he's continuing the legacy of the great Shane Warne. Here comes the leg spinner. This time Hashmat once again using his feet, hitting it towards the leg side area, mid-on, and an easy single there for skipper Hashmat. Hashmatullah Shahidi through the tournament has done well. 350s before this. This time it is Ibrahim Zadran who hits the ball back to the bowler, Adam Zampa. Once again to Ibrahim Zadran, who hits it towards the offside area, the mid-off region, for another single. Adam Zampa has peaked at the right time, very reliable, and given his all-round contribution with the ball, bat and field against England. He is certainly a big asset for the Aussie side, and they're looking dangerous with each game. Australia once again. Adam Zampa, this one hits the stumps, and did it hit the bat as well? We'll check that out at a speed of 89 km per hour. Hashmat batting on 22, Ibrahim on 81 now. So that was a dot delivery. He's given away 3 runs of the 4 deliveries so far. Adam Zampa once again over the wicket, this time to Hashmat, who hits it towards the covers area for another single. So another partnership developing. Good thing from Afghanistan perspective, they've had some partnership for every wicket. 38 for the first wicket, then there was a good partnership for the second wicket between Ibrahim and Rahmat Shah, and now for the third wicket between skipper Hashmat and Ibrahim. Ibrahim being the constant denominator there. Adam Zampa for the last time in this over, in line with the off stump, and there was a movement as well, as that has been hit towards the offside area point region for another single. So 4 singles and a wide in Adam Zampa's 7th over.
and at an economy rate of 5, he's given away 35 runs from his 7 overs. Afghanistan, 165 runs for the loss of 2 wickets after 35 overs. Australia making 2 changes to their playing 11 today. Marsh and Glenn Maxwell into the side. No Steve Smith today, who had complained of the health condition vertigo, and Cameron Green missing out today's action as well. Mitchell Starc, yes, as expected, being brought back once again. This is the 3rd time he'll be brought back. He bowled 3 overs first up, then another 2. In terms of leading wicket takers in the tournament, Dilshan Madhushankar has picked up 21 of Sri Lanka at number 1, Adam Zampa at number 2 with 19 wickets, South African Marco Jansen with 17, India's Mohammad Shami and Pakistan's Shah Afridi with 16 wickets apiece at 4th and 5th. Mitchell Starc running away from us, left arm around the wicket to Ibrahim Zadran, and that has been hit towards the mid-on area for a quick single. Travis Head throwing the ball to the keeper Josh Inglis there. Travis Head making a good comeback after recovering from that injury he got when Australia was playing against South Africa in that 5-match ODI series. And good recovery from the injury. Nice century coming from the blade of Travis Head in that match against New Zealand in Dharamshala, contributing with ball today as well, bowling those 2 overs for 11 runs and fielding as well. Mitchell Starc. Will he bowl the 6th over without giving any wide? That's the question. In runs Mitchell Starc away from us. This is the commentator box. The media end. This one on the leg side. Will this be a wide? No. So he is straying down on that particular area. That was a dot ball. So we already have seen a century of dot balls. Mitchell Starc having a conversation with the umpire there, and some smiles being exchanged between the umpire and Mitchell Starc. Not sure what the joke there was, but good to see smiles all around. In yesterday's event, one continues to debate the role of the captain, the fielding captain, whether they should appeal, the role of the umpires, whether they could have used some more caution, or whether the batter could have come more in time or probably sought the permission. All of this will be debated. Once again, Mitchell Starc, left arm, over the wicket to skipper Hashmatullah Shahidi, who hits it towards the offside point region for an easy single. Zadran has faced 52 dot deliveries. Overall, Afghanistan has 107 dot balls. So Zadran batting well on 83, but is he taking too many dot deliveries? From Afghanistan perspective, they would certainly want that they accelerate the scoring, because if you look at the pitch, there's nothing uneven about the pitch. The ball is helping the pace bowlers, and therefore they need to really put up a competitive total. This time Mitchell Starc bowling to Ibrahim Zadran, who hits it towards the deep point area for an easy single. Mitchell Starc so far has given away 39 runs, and time since last boundary 22 minutes, 30 balls. So the boundaries have been difficult to come for Afghanistan. Hashmatullah Shahidi did show some intent on a couple of occasions when he did use his steps, coming out to hit the ball over the bowler's head. But 30 balls since last boundary. Will Hashmatullah Shahidi take on Mitchell Starc? Starc once again running away from us, bowling over the wicket to Hashmatullah Shahidi, who hits it towards the offside area, point region. No run results. Another dot ball. Too high a percentage of dot balls in Afghanistan innings. Afghan skipper very mindful of that. They cannot afford such high percentage of dot balls. Mitchell Starc doing well in this first over of the 3rd spell he is bowled. He's given away 1 wide though, and 3 singles. So the wides is something that has been troubling Mitchell Starc for some time now, and the partnership is of 48 of 69 deliveries. Once again Starc over the wicket to skipper Hashmatullah Shahidi, and Hashmatullah Shahidi wanted to hit on the leg side towards the square leg area, didn't manage to connect the ball the way he wanted. Another dot ball results. So the partnership for the 3rd wicket between skipper Hashmatullah Shahidi and opener Ibrahim Zadran is nearing 50. It's 48 right now of 70 balls. So that's a good century, a half-century effort that will come up in just a bit, hopefully.
but it's the strike rate that could be of some concern. Michel Starc from the media end, running away from us. Over the wicket to Shahidi. This one again, very good line, very good length, a good length delivery in line with the middle and the off stump. Not much could be done from Shahidi. Another dot ball. So 3 consecutive dot balls after 6 overs. Starc has given away 39 runs, hasn't picked up any wicket. Ever since he made his World Cup debut in 2015, in all of the innings, Michel Starc has picked up at least 1 wicket, barring that match in Dharamshala against New Zealand where he went wicketless. Today, after 6 overs, he's given away 39 runs, hasn't picked up any wicket. Afghanistan, after 36 overs, 169 for the loss of 2 wickets. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. ट्रेविस हेड नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं. एडम जाम्पा की जगह पे उनको लाया गया. एडम जाम्पा थोड़ी देर के लिए ड्रेसिंग रूम में गए थे, पवेलियन में गए थे. ट्रेविस हेड सामने वाले चोर की तरफ से. अफगानिस्तान को अब कुछ अलग हटकर सोचना होगा, कुछ अलग हटकर करना होगा, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल उनको पकड़ के रखा हुआ है. क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, बहुत चैलेंजिंग टोटल, बहुत बड़ा टोटल बनाना मुश्किल होगा. और ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, उनके पास इतनी लंबी बैटिंग है, तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से वो रन बना लेगा. ट्रेविस हेड राउंड द विकेट अभी भी गेंद करेंगे. हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान सामने उनके, वो इस समय 24 रन बनाकर सामना करेंगे. और 24 रन बनाने के लिए उन्होंने 41 गेंदें ली हैं. इस बार उन्होंने अपना 25वां रन बनाया. ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कट किया. थर्ड मैन की तरफ आती हुई गेंद को आसानी से फील्ड कर लिया गया और कोई वहां दिक्कत नहीं हुई दोनों बैट्समैन को 1 रन लेने में. लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार अफगानिस्तान के बैट्समैन को, किसी एक बैट्समैन को अब खुलकर खेलना होगा, करारे शॉट लगाने होंगे. कुछ ऐसे ओवर चाहिए जिसमें, क्योंकि अब उनके खाते में लगभग इसके बाद में 13 ओवर रह जाएंगे. ये 37वां ओवर चल रहा है. और ये देखिए ट्रेविस हेड जैसे जो कि पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, वो भी बहुत ज्यादा रन नहीं दे रहे हैं. बैटर पैड को साथ मिलाकर इब्राहिम ज़ादरान, बॉलर्स बैक पुश, और फिर बहुत अच्छी, मैं कहूंगा कि बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी योजना के साथ उतरे हैं. क्योंकि ट्रेविस हेड लगभग एक रेगुलर बॉलर की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, रन नहीं दे रहे हैं. और ट्रेविस हेड की इस गेंद को मिड विकेट में खेला. गेंद को जब तक फील्ड किया जाएगा स्टॉइनिस के द्वारा, 1 रन आसानी से मिलेगा. 5 गेंद में 3 रन और सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को कोई परेशानी नहीं होगी. पर हशमतुल्लाह शाह शाहिदी और इब्राहिम ज़ादरान, कुछ सोचना होगा, कुछ लंबी हिट लगानी होगी. कोशिश की इस बार शाहिदी ने, लेकिन लंबी हिट नहीं लगा पाए. स्टॉइनिस के पास कवर्स में आती हुई 1 रन के साथ ही चोर बदला. इस बीच ट्रेविस हेड ने एम्पायर की से पूछा कि क्या मेरा ओवर पूरा हो गया. एम्पायर ने इशारा किया, आपका ओवर पूरा हो चुका है. और जैसे ही ओवर पूरा होने की बात हुई तो एम्पायर से अनुमति लेकर अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी जो स्थानापन्न खिलाड़ी हैं वो आए हैं ग्लव्स लेकर, और शायद कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर, एक बैट लेकर भी आए हैं. निश्चित तौर से जो टीम मैनेजमेंट है, कोच हैं जोनाथन ट्रॉट और असिस्टेंट कोच जिनसे हम कल मिल पाए थे मैदान पर, मैं और अमित शाम को जब यहाँ पर ईडन गार्डन्स में थे तो वहाँ पे हम उनसे मुलाकात हो पाई थी. रईस अहमद जाई जो कि अफगानिस्तान के पहले कप्तान भी थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, निश्चित तौर से वहाँ, और अजय जाडेजा कंसल्टेंट के तौर पर है. तो कोई ना कोई मैसेज, कोई संदेशा जरूर आया है. मिशेल स्टार्क नए ओवर की शुरुआत, इस बार इसको आक्रामक स्ट्रोक करने की कोशिश की शाहिदी ने, लेकिन सफलता नहीं मिली. सीधा कवर्स में ट्रेविस हेड. ट्रेविस हेड ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर जगह दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं और लगातार बात करते रहते हैं कप्तान से, अपने गेंदबाजों से को जो गेंदबाजी कर रहे होते हैं उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं. मिशेल स्टार्क लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने उनके शाहिदी.
लंबा रन अप है, हमसे दूर जाने की तैयारी में करते हुए बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल गेंदबाजी कर रहे हैं और क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। शाहिदी वहां कुछ अलग हटकर करना चाहते थे, शाहिदी शायद इसको खेलना चाहते थे, थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन जब तक शाहिदी कुछ करते सोचते, जब तक उनका बल्ला ऊपर से नीचे तक आता, गेंद स्टंप्स की जड़ में जा टकराई और शाहिदी का सफर इस मैच में 26 रन बनाकर 43 गेंदें उन्होंने खर्ची, 2 चौके लगाए। मिशेल स्टार्क ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और अब नए बैट्समैन आ रहे हैं और निश्चित तौर से नए जो बैट्समैन हैं उनको अजमतुल्लाह ओमराज़ाई 20 मैचेस खेले, उन्होंने 371 रन बनाए हैं, 73 उनका सर्वाधिक स्कोर है, प्रकाश तपस्वी जी की सूचना। तो सुनील, अभी जो ये रन गति चल रही है, अगर इस तरह से रन बनाते हैं तो कितने रन बन सकते हैं 50 ओवर में? सुनील जब तक गणना करेंगे तब तक हम आपसे बात करते हैं। अजमतुल्लाह ओमराज़ाई ये आकर उन्होंने अभी गार्ड लिया है। इस दौरान इब्राहिम जादरान ने जाके उनसे कुछ बातचीत की और मैं समझता हूं कि इब्राहिम जादरान जिस तरह के मोड में है, जिस तरह की सोच में है, उनको एक छोर संभाल के रखना चाहिए और अजमतुल्लाह को 1-2 ओवर्स के बाद या 4-5 गेंदें खेलने के बाद उनको करारे प्रहार लगाने पड़ेंगे, वरना अफगानिस्तान के लिए बहुत लंबा स्कोर बनाना मुश्किल हो जाएगा। 233 रन बना पाएंगे इस वर्तमान रन गति से अफगानिस्तान का जहां तक सवाल है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मिशेल स्टार्क, ये गेंद उनकी बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अंदर आती हुई गेंद, बैटर पैड को साथ मिलाया, बॉलर्स बैक पुश, कोई मौका नहीं रन बनाने का। फील्डिंग की बात करते हैं, डीप थर्ड मैन। एक बहुत अच्छी बात यह है कि पैट कमिंस ने बहुत अच्छी फील्डिंग लगाई है और साथ ही उनके गेंदबाजों ने भी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी की है। तो अगर हम ऑफ साइड की बात करें, 2 खिलाड़ी बाउंड्री रोकने के लिए हैं, हालांकि उनका ज्यादा काम होता नहीं है। एक डीप थर्ड मैन है, एक डीप स्वीपर पॉइंट है, क्योंकि 30 गज के घेरे के अंदर ही गेंद रह जाती है, चौके बहुत कम लगते हैं। जैसा कि अमित ने आपको बताया था कि 30 गेंदों से चौका नहीं मिला, 22 मिनट से चौका नहीं आया और अब भी स्वीपर पॉइंट पे जो फील्डर है उसको ही काम लिया गया। और जोश हेजलवुड थे, अजमतुल्लाह ने इसको आराम से खेला और सीधी गेंद फील्डर के पास। तो 3 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर है, बिल्कुल एक रेखा में, एक लाइन में है। हमारे सामने जो मिड ऑफ है पैट कमिंस है वहां पे, उसके बाद में एडम ज़ाम्पा कवर्स में, और इस बार ये ओमराज़ाई का छक्का, पहला छक्का इस पारी का। अजमतुल्लाह ओमराज़ाई ने ये बहुत शानदार शॉट, और जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि इब्राहिम जादरान को रुकना होगा और अजमत को बैटिंग करनी होगी, जैसे हमारी बात अमित उन्होंने सुन ली और ये छक्का जिसकी आप बात कर रहे थे कि अभी तक छक्का लगा नहीं है। First 6 of Afghanistan innings, a welcome 6 coming from the plate of Omarzai. मिशेल स्टार्क छक्का खाने के बाद सोच रहे हैं क्या करें, दौड़ लगाई, ये गेंद उनकी बहुत अच्छी गेंद, इस बार मौका नहीं है ओमराज़ाई के लिए। बैटर पैड को साथ मिलाया, ट्रेविस हेड लॉन्ग ऑन में आती हुई गेंद, पहले ही रोक दिया उसको मिड ऑन की स्थिति पे। मिशेल स्टार्क ने अपना कैप लिया, टोपी ली एम्पायर से और अपनी फील्ड प्लेसमेंट पे अपनी फील्ड की जगह पे जाके अब फील्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं इस बीच ट्रेविस हेड जो कि सामने वाले छोर की तरफ से अपना नया ओवर शुरू करेंगे। लेकिन उनके लिए फील्ड में थोड़ा सा अलग हटकर सोच रखी जा रही है पैट कमिंस के लिए। ये जो फील्ड उनके लिए लगाई गई है,
इस फील्ड में पिछले ओवर में ऑफ साइड में 5 बैट्समैन थे, खिलाड़ी थे। इस बार ऑन साइड पे 5 खिलाड़ी रखे गए थे, फिर एकाएक और 5 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। यह पहली बार हमने देखा है पैट कमिंस को इस तरह से करते हुए। शायद ओमरज़ाई जिस मूड में है उसके लिए तैयारी हो रही है। अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई ये अब सामना करेंगे। स्टंप्स पे आकर उन्होंने गार्ड लिया, एम्पायर की तरफ देखा। 2 बहुत ही अनुभवी और शानदार एम्पायर इस मैच में, जो फील्ड एम्पायर्स हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद ट्रेविस हेड की, बैटर पैड को साथ मिलाया ओमरज़ाई ने, कोई मौका नहीं। माइकल गूफ और एलेक्स वाफ ये एम्पायर्स हैं। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर। अगर कोई कोशिश की ओमरज़ाई ने, लेकिन उसमें से एक फील्डर जो लॉन्ग ऑन पर था उसको इस बार मेहनत करनी पड़ी, ग्लेन मैक्सवेल को। और जब तक वो इस गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार 1 रन और मिलेगा, 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ, जैसा हमने कहा कि कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा। एक छक्का जरूर लगाया ओमरज़ाई ने, लेकिन बार बार यह काम उनको करना होगा। इस बार लॉन्ग ऑफ में जाती हुई गेंद, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। दूसरा बहुत ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अनुभव नहीं है। और अमित भी आपको बार बार कह रहे थे कि डॉट्स बॉल की संख्या बहुत ज्यादा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, बैटर पैड को साथ मिलाकर कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ। 9वां ओवर मैक्सवेल का 39 रन 1 विकेट पर, 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर 39 ओवर का खेल समाप्त हुआ। To the semi-finals and the final, the ICC Families Cricket's global fan community with once-in-a-lifetime experiences, priority ticket access and exclusive जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं पैट कमिंस। गेंदबाजी में परिवर्तन, मिशेल स्टार्क की जगह पर पैट कमिंस। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने उनके इब्राहिम ज़ादरान। लेग स्टंप पर यह गेंद को खेला, बहुत आसानी से इसको फील्ड कर लिया गया जाम्पा के द्वारा। रन नहीं मिलेगा। और एक आध स्ट्रोक को छोड़ दें तो अफगानिस्तान अभी तक जो बेड़ियां जकड़ रखी हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बार बार कहा कि पैट कमिंस ने फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगा रखी है। इस समय 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के घेरे के अंदर है सिंगल रोकने के लिए। उनसे अगर गेंद छूट जाए तो एक स्वीपर पॉइंट है, एक डीप थर्ड मैन है। लेकिन इस बार डीप थर्ड मैन के लिए नहीं, डीप फाइन लेग के लिए फील्डिंग करने का मौका आया मिशेल स्टार्क के लिए। लेग स्टंप के बाहर दिशा भटके थे पैट कमिंस और उसको आसानी से खेलकर 1 रन ले लिया इब्राहिम ने। इब्राहिम पहुंचे 89 पे, 89 पे, जबकि अजमत इस समय सामना करेंगे 9 रन बनाकर। 8 गेंदें उन्होंने अब तक ली हैं। अजमत पैट कमिंस के सामने। ऑन साइड फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं है, वही फील्ड है। एक डीप फाइन लेग है, एक डीप मिड विकेट है, बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट, पैट कमिंस। शॉर्ट गेंद और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। लेग स्टंप के बाहर दिशा भटके और ओमरज़ाई को कुछ नहीं करना था। उन्होंने सिर्फ हल्का सा बल्ला इस पे लगाया, बल्ला हल्का सा लगाया और गेंद सीधी बहुत ही फाइन साइड स्क्रीन के नीचे चली गई। इस बीच एम्पायर ने लेग बाइज का इशारा दिया तो निश्चित तौर से वो खेल नहीं पाए थे इसको बहुत आश्वस्त तरीके से।
फिर अफगानिस्तान के जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, वो बार बार मैदान में आ रहे हैं. काफी इतना जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बार बार लोग नहीं आते, लेकिन शायद गर्मी ज्यादा है तो पानी की वहां पे मदद कर रहे हैं. कुछ बैट लेके आते हैं और शायद कुछ संदेश भी लेके आते हैं, लेकिन एम्पायर्स नियम के तौर पर. और सुनील, हमारे स्कोरर सुनील जी ने बताया कि हेलमेट को बॉल लगा तो इसलिए भी खेल रुका है, लेकिन अब खेल बहुत जल्दी तैयारी शुरू होने की तैयारी में. पैट कमिंस एडम जाम्पा से कुछ बातचीत करते हुए. वानखेड़े का बहुत खूबसूरत मैदान है, बहुत ही खूबसूरत. और जितना हमने कल देखा, जिस तरह का ये हमारा कमेंटेटर बॉक्स है, मीडिया सेंटर है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे दर्शकों के बैठने के लिए. बाहर पूरा खाने पीने का, अगर आपको कुछ भी चाहिए, सब कुछ सब तरह का यहाँ उपलब्ध है. धीरे धीरे दर्शक दीर्घाएं भर रही हैं. पहले से काफी बड़ी संख्या में जब मैच शुरू हुआ था तो खाली स्टैंड्स दिखाई दे रहे थे. इस समय मेरा अपना मानना है कि 15 से 20 हजार लोग कम से कम स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं. पैट कमिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, इसको उठाकर खेला है. गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन. अच्छा शॉट ये अजमतुल्लाह ओमरजाई का. आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास चारा नहीं है. बैट उनके हाथ में घूमा जरूर, लेकिन मिड विकेट पे गेंद आसानी से गई 4 रन के लिए. शॉर्ट गेंद थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी शॉर्ट नहीं थी. अजमत ने पीछे हटकर अपने लिए जगह बनाई और सही तरीके से इसको प्लेस कर दिया. 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस समय ये 40वां ओवर चल रहा है पारी का. 10 ओवर इसके बाद बचेंगे. पैट कमिंस और बहुत अच्छा शॉट, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा. स्टॉइनिस जब तक इसको फील्ड करेंगे. कवर्स में शॉट अच्छा था, तेजी से खेला गया था, बल्ले के बीचों बीच आया. अच्छा महसूस किया होगा अजमतुल्लाह ओमरजाई ने. अब जादरान, इब्राहिम जादरान जो 89 रन बनाकर खेल रहे हैं और अपने शतक से 11 रन दूर है. अगर वो ये शतक बना लेते हैं तो उनका ये 6ठा शतक होना चाहिए. पैट कमिंस 6ठा ओवर करते हुए, अंतिम गेंद लेकर उसकी आते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट. कमेंटेटर बॉक्स छोर की तरफ से हमसे दूर जाते हुए, और ये गेंद थर्ड मैन से पहले गिरी नो मैन्स लैंड में. ओमरजाई का जो सोच थी वो अच्छी थी. स्कूप शॉट खेला, लेकिन जिस दिशा में खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए. कैच नहीं था, लेकिन एक बार अफगानिस्तान के जो समर्थक हैं उनकी सांसें जरूर अटक गई होंगी, क्योंकि फील्डर के पास जाके गेंद गिरी थी, पर वहां कोई मौका नहीं. 1 रन के साथ छोर बदले. ओवर समाप्त हुआ पैट कमिंस का. इस ओवर की समाप्ति पर 40 ओवर जबकि हो चुके हैं. अंतिम 10 ओवर का खेल बाकी है. 195 रन अफगानिस्तान 3 विकेट के नुकसान पे. अब अंतिम 10 ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है. एडम जाम्पा सामने वाले छोर की तरफ से और हमारे छोर से अमित अरोड़ा. धन्यवाद डॉक्टर दिनेश. So last 10 overs now as far as Afghanistan innings is concerned. After 40 overs, 195 for 3. Adam Zampa with the ball, as this is the last power play where 5 fielders can be stationed outside the 30-yard circle. On strike, Ibrahim Zadran batting on 90 of 117 deliveries. Zampa bowling his 8th over, the first delivery on the leg side. Easily glided towards the mid-wicket area for an easy single before Stoinis could pick that ball and get back to the keeper's end. 1 run added to the Afghanistan total. Azmat has looked good ever since he came into bat. He's batting on 14 of 11 deliveries, and that 14 also includes a huge 6. The first and the only 6 so far of the Afghanistan innings.
And once Shahidi got out, we've got two right-handed batters at the crease. Azmat now taking on Adam Zampa. Zampa, slight turn outside the off stump, and the ball bounced as well. Azmat hitting that ball towards the short cover area, no run results. It'll be interesting to see Azmatullah, Omarzai versus Adam Zampa. Will he try to hit him down the ground? Adam Zampa, once again, the leg spinner. This time, once again, towards the off stump, and it has been hit towards mid-off area for another single. Jonathan Trott, the head coach of Afghanistan, Captain Shahidi, all sitting in the dugout contemplating what would be a good score for Afghanistan after they decided to bat first after winning the toss. 197 for 3 so far, 41st over in progress. Zampa runs in to bowl his fourth delivery. This one has been hit towards the offside area, deep point, and another easy single gets added to the total. David Warner, the fielder there. This is the Wankhede Stadium in Mumbai, next to the Arabian Sea, and it's a very pleasant evening now after a little hot and humid conditions in the afternoon. Some lights are on, the sun is setting. Adam Zampa runs into bowl the fifth delivery. This one has been hit straight, it's in the air, and it's gone for a 6. That's the second 6 from Azmat's blade. Welcome 6, that takes past Afghanistan to 200 plus now. That was a flighty delivery. Azmat standing in the crease, getting his weight behind the delivery and hitting an 83-meter 6 of Adam Zampa. So the first 50 for Afghanistan came in 64 deliveries, the second in 63, third in 58, and the fourth one just accomplished in 60 deliveries. Thank you very much to the scorer Sunil Lange, as Zampa bowls the last delivery in line with the middle stump, and Azmat hits that delivery towards the short cover area, a dot ball. So 6 and 3 singles, 9 runs coming off Adam Zampa's 8th over. In 8 overs so far, Zampa has given away 44 runs. Hasn't picked up any wicket yet. Remember, after Dilshan Madhushankar, the left-arm seamer from Sri Lanka, who's picked up 21 wickets in the tournament so far. At number 2 is Aussie leg spinner Adam Zampa with 19 wickets, but a wicket less so far. It's a beautiful picturesque scene when you see the setting sun across the Arabian Sea, and many people gather every evening and they just sit on the Marine Drive for some time. It is absolutely picturesque, very meditative. You can come along all by yourself or with your friends, and with the fact that the match is on in the nearby Wankhede Stadium just adds to that beautiful feeling. Pat Cummins, the skipper, now bowls in to bowl his 7th over, and that delivery has been hit towards the close-in fielder. No run results. Pat Cummins also has been impressive in terms of the economy rate. Hasn't given away extras also, unlike Mitchell Starc, but wicketless so far. At the end of first 10 overs, Australia restricted Afghanistan to 46 runs for the loss of 1 wicket from 11 to 20, 53 for no loss, and then 1 wicket each in 30 to 40, and thereafter. Pat Cummins once again, this time in line with the middle stump, and the batter hits the delivery back to the bowler. No run results. So Afghanistan has from the start played very sedately, ensuring that at no point of time there was back-to-back wicket loss. Every wicket had a partnership that was stitched, and cricket, they say, is all about partnerships. And now with Azmat at the crease, the intent looks clear to score runs a little quicker. Ibrahim right now 92 facing Cummins. This one has been hit towards the offside, deep point area. It is running towards the boundary. Marcus Stoinis dives. I think umpire would certainly like to check whether when he stopped the ball, did he also have any part of the body on that boundary cover. It was a good effort by Marcus Stoinis at the deep point area. Had to run some distance from the covers towards the point. He did manage to stop the ball. Did any part of the body touch the boundary rope? On the replay, looks like that wasn't the case. So that should certainly save crucial runs for Australia. And that is what Australia are known for, giving their 100% when it comes to
diving, fielding, saving that extra run. The replays are being looked at once again, but looks like Marcus Stoinis stopped the ball and has saved crucial runs for his team. So Afghanistan now 206 runs for the loss of 3 wickets. 2 runs get added to the Afghanistan total. Ibrahim Zadran unbeaten on 94, having faced 122 deliveries. Pat Cummins once again running away from us over the wicket, and this ball has been hit towards the gully area. Another single run gets added to Ibrahim Zadran, who's now on to 95. Hazmat on 21 will take strike to Pat Cummins. Cummins is into his 7th over. The spectators' numbers keep adding, and it's good to see that even if it's a non-India match, yet the love that they have for the sport brings them over to the stadium. Pat Cummins once again over the wicket. An over-pitch delivery, this time driven and well stopped by the fielder there at covers, restricting to a single, although it does result. There was a possibility of an overthrow there as well. Manas Labuschagne, he's good in field, always diving around to stop the ball. 1 run results. So 4 runs so far from the 5 deliveries that Pat Cummins has bowled. That was a good effort. It was hit hard, and as they say, don't run on the misfield. Initially they decided not to run, but with the throw that Manas Labuschagne hit, that was resulted into an overthrow for a single run. One last time in this over, Pat Cummins over the wicket, bowling to the batter there, who almost has a similar stroke. Once again, Manas Labuschagne comes into the picture. This time he does not throw. He doesn't throw this time, but that still results into a single. So 5 runs of that Pat Cummins over. After 7 overs, Cummins has given away 33 runs, hasn't picked up any wicket. And after 42 overs, Afghanistan 209 runs for the loss of 3 wickets. 7 bowlers used by Australian skipper Pat Cummins. Interestingly, Stoinis has just been given 1 over. Follow wickets, 38, first wicket, 121, the second wicket, and the third wicket of the skipper Hashmatullah Shahidi fell when the Afghanistan score was 173. What would bother Australia though is that after 42 overs, 209 for 3 includes 14 extras, and bulk of them have been wides courtesy Mitchell Starc, who's bowled 7 overs today, given away 45 runs. That's an economy of 6.43. Picked up that wicket of Hashmatullah Shahidi. Hazlewood has also bowled 7 overs. Maxwell has bowled 9. It'll be interesting to see who does Pat Cummins go for and who gets to complete their full quota of 10 overs today. Zampa has been a little off colour as well, hasn't picked up any wicket. 8 overs, 44 runs. He's kept it tight on some occasions though. And once again he'll be in action. Adam Zampa starting his next over. This will be his 9th over. The first delivery has been hit towards the mid-on area for a single. Mitchell Starc, the fielder there. 1 run results. Afghanistan 210 for 3. Azmat batting on 22, and with that single, Ibrahim now moves to 97. This is a well-deserved century that should happen to Ibrahim Zadran, 21-year-old Afghan opener. And as the tournament has progressed, he's also progressed well. This one, Azmat wanted to heave it towards the deep wicket area, but could not connect the ball with the bat, and it results into a dot ball. So this will be interesting. Well, highest scores for Afghanistan in ICC Men's Cricket World Cup. Ibrahim Zadran currently batting in 97 at number 1. He's gone past Samiullah Shinwari, who had scored 96 versus Scotland. Ibrahim scored 87 versus Pakistan in this edition. Ikram Alikhil, the wicketkeeper, had scored 86 versus West Indies in the previous edition. So that's a new highest score by Ibrahim in Cricket World Cup. Azmat once again, this time he goes aerial, and will he be caught? Yes, he will. So another wicket falls. Azmat, who was trying to hit Adam Zampa, this time holds on to Glenn Maxwell, who made no mistake standing at the long off area. And Azmat is disappointed that he could not find the gap. And once he went aerial, that was straight into the hands of Glenn Maxwell, who didn't even have to move much. So Adam Zampa, once again, among the wickets, picking up his first wicket of the day. And that is his 20th wicket of the tournament. Very, very unhappy Azmat
with his shot. He's looked good in terms of the stroke making, but unfortunately has to depart. He scored 22 of 18 deliveries. That was punctuated by 1-4, 2 sixes, 10 dot balls, a strike rate of 122. Caught by Maxwell of Zampa, as Afghanistan's scorecard reads 210 for the loss of 4 wickets. And the fall of Azmatullah Omarzai brings to the crease the very experienced Mohammad Nabi, player of the match for Afghanistan in the previous match that they played against Netherlands, picked up 3 wickets. Mohammad Nabi, who's been almost synonymous with Afghanistan's cricket, has played almost all matches of Afghanistan and a great ambassador. And last evening, it was a great delight for the Afghan team that when they were practicing and getting a sense of the wicket, it was none other than the cricketing icon Sachin who met all of them. And in 5 innings, Mohammad Nabi in this edition has only made 41 runs from the bat so far, but he's contributed more from the ball. Can he hit some big shots today? He's very capable with the bat, and it was nice when Mohammad Nabi yesterday also presented a token of gratitude and appreciation to Sachin, who spent quite a lot of time with the Afghan cricketers last evening. Once again, Zampa, after picking the wicket, flighting the delivery to Mohammad Nabi as he gets off the mark with the very first delivery, hitting it towards the leg side, mid-wicket area for an easy single. On strike now, Ibrahim Zadran, just 1 stroke away from what will be a very well-deserved century, and that will motivate the Afghan batting. A century in World Cup will always have a premium to it. And Zadran, 97 not out. Zampa bowls in line with the middle stump, and Zadran hits the ball back to Zampa. No run results. Will he go for a big shot? Ibrahim Zadran, the Afghan opener. Today he opened with Rahmanullah Gurbaz. Gurbaz got out early, but Zadran since then has had partnerships, first with Gurbaz, then with Rahmat Shah, then with skipper Shahidi, and little partnership with Azmat as well. This time he hits it towards the deep mid-wicket area for a single, moves to 98, and just 1 hit away from his century. After 43 overs, Afghanistan 212 for the loss of 4 wickets. Good over there by Zampa, picking up a wicket and giving away just 3 runs. After them, Ibrahim and Nabi, we've got Ikram Alikhil, wicket-keeper who's impressed with batting. Rashid Khan, known to hit huge sixes. And then you've got Mujeeb, Naveen and Ahmed. So 7 more overs to go. 7-6 are 42. So 42 deliveries. And Afghanistan would like to get past 270, 280 to put some sort of pressure to the Australian batting. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेड। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। So after 43 overs, Afghanistan 212 for 4, and a fresh over starts as Ibrahim Zadran takes strike. And this first delivery has been hit towards the mid-on area for another single. Zadran moves to 99, 1 run away from his century. That is a good delivery by Josh Hazlewood, who's bowling his 8th over. He's given away 27 runs so far and picked up 1 wicket. The wicket of Rahmanullah Gurbaz that he picked. Hazlewood has been the pick of the bowlers as far as the economy rate is concerned, keeping a very good line and length. Hazlewood bowling from the media end. That is where the Akashvani commentary box is situated as he runs away from us, this time bowling to Mohammad Nabi. Right arm over the wicket. Good length delivery to Mohammad Nabi, who hits it to the fielder nearby, standing at short mid-wicket, no run results. At current rate, Afghanistan will get to about 246, but the score predictor says they can go up to 270 with some acceleration. So 270 is what the prediction is of the score. Nabi batting on 1 of 2 deliveries will be taking strike. Ibrahim on the other hand is at 99. Mitch Marsh fielding at backward point. Cummins, the skipper, at covers. In comes Josh Hazlewood for the next delivery.
And this has been hit towards the close-in fielder on the offside. Short cover for a run. And now you can hear the sound of clapping in the background. And the reason is that on strike is Ibrahim Zadran. 99 not out of 128 deliveries, a strike rate of 77.3. Excitement building up in the Afghanistan dugout as well, as we can see Gurbaz and the others in anticipation of the 100 by the Afghan batter. Ibrahim Zadran taking a closer look at the field. Josh Hazlewood bracing up, running away from us. Bowling to Ibrahim Zadran, batting on 99. Hazlewood, a good length delivery on the off stump, and that has been hit towards the nearby fielder at short cover. No run results. Spectators will again build up the entire anticipation once again. That's the magic of being here in the ground. The spectators just go behind you. They would love to see Ibrahim Zadran complete his century. It's a well-deserved ton by the Afghan opener, just of 21 years of age. Once again, Josh Hazlewood running away from us. Over the wicket, bowling to Ibrahim Zadran. A good length delivery that has been played towards the offside gully area. Another dot ball. Ibrahim Zadran just practicing that shot again. Maybe he wanted to kind of make it into the gap. And the dugout is also waiting. Naveen-ul-Haq there, Rashid Khan, all of them out there wanting to support Ibrahim Zadran as he's on the verge of a century. Josh Hazlewood running away from us to Ibrahim Zadran. A good length delivery. This time it's been hit towards the close-in fielder. Will it be a run or a run out? Well, he's got that run that he was looking for. Congratulations, Ibrahim Zadran. He completes the second run as well. Lifts both his hands, appreciating the gratitude and the claps by the spectators who've gathered here at Wankhede Stadium. Also his teammates. What a moment this is for Afghanistan. Ibrahim Zadran, 21-year-old opener, scoring a century. He's played 27 ODI matches, scored 1,244 runs so far. 101 to his name today. Of 131 deliveries, 60 dot balls, 56 singles, 7 twos. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. So Ibrahim Zadran, 101 of 131 deliveries. Dr. Dinesh Nagpal, congratulations to Ibrahim Zadran, and I'm sure this will motivate Afghanistan and their batting for times to come. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इब्राहिम जादरान ने बहुत अच्छा काम किया आज और अपनी टीम के लिए वहां पे खड़े रहे. लगातार उनके आसपास विकेटें गिरती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से और पिछले जो 50 रन जादरान ने बनाए उसमें एक ही चौका उन्होंने लगाया. जादरान ने जो शीट एंकर का रोल प्ले किया है, उन्होंने पारी को संभाल कर रखा है. जैसा कि गुरबाज पहले आउट हुए, उसके बाद रहमत शाह भी ज्यादा नहीं रुक पाए. फिर हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान, वो भी थोड़े रन बनाकर आउट हो गए. अजमतुल्लाह ओमरजाई, उन्होंने भी 20-22 रन बनाए. तो इब्राहिम जादरान ने अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज किया है और वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए ये पहला शतक है आईसीसी वर्ल्ड कप में. तो जहां तक कि इब्राहिम जादरान का सवाल है, वो हमेशा इतिहास में उनका दर्ज हो गया है. मोहम्मद नबी को ये गेंद, इसको खेलना शॉर्ट गेंद थी, इसको मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन जब तक वो समझते एडम जाम्पा की इस गेंद को, गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगती हुई शॉर्ट थर्ड मैन में चली गई. रन नहीं मिलेगा कोई भी. एडम जाम्पा राइट आर्म ओवर द विकेट, दूसरी गेंद लेकर हमारी तरफ से आते हुए, और फिर एक बार नबी ने कदमों का इस्तेमाल करा, फिर उसको अटपटे ढंग से किसी तरह से डीप फाइन लेग में खेला. जब तक इस गेंद को ट्रेविस हेड फील्ड करेंगे, एक रन के साथ ही मोहम्मद नबी चोर बदल लेंगे. मोहम्मद नबी स्ट्रोक को खेलने के प्रयास में थोड़ा सा हल्का सा गिर भी गए थे. इब्राहिम जादरान
अब सामना करेंगे एडम जाम्पा का। देखना है कि शतक बनाने के बाद अब कुछ खुल के शॉट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या अभी भी पारी को संभाल के रखेंगे। और इस बार उन्होंने ये गेंद 6 रन। और अब चूंकि अंतिम ओवरों का खेल है, इसलिए इब्राहिम, जादरान और मोहम्मद नबी दोनों को प्रहार करने होंगे। 6 रनों से एकदम से स्कोर उछलकर आगे बढ़ा अफगानिस्तान का 223 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक। गुगली गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप पर पड़ी और जादरान ने अपना मौका तड़ा और इस गेंद को डीप मिड ऑन के बाहर 6 रन के लिए। इस बार एडम जाम्पा ने तेज गति से गेंद फेंकी, शॉर्ट गेंद थी, कोई आजादी नहीं, लेकिन जादरान ने उसको पॉइंट में खेलकर 1 रन ले लिया। मोहम्मद नबी जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, 116 का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है एक दिवसीय में। एडम जाम्पा शॉर्ट गेंद, इसको लॉन्ग ऑन में पुश किया गेंद की तरफ। ये मोहम्मद नबी का अनुभव देखिए। ये पहले जब जिस तरह के स्ट्रोक्स पर जादरान और शाहिदी थे, या जादरान और गुरबाज थे, वो 1 ही रन ले पा रहे थे, लेकिन मोहम्मद नबी ने पहला रन इतनी तेजी से लिया कि जब तक फील्डर उस पर आता लॉन्ग ऑन पर, बहुत आसानी से 2 रन ले लिए। 226 रन 4 विकेट के नुकसान पर एडम जाम्पा 45वां ओवर का अंतिम गेंद लेकर, और ये गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ। इसको बहुत अच्छे से पैट कमिंस ने आधे रास्ते में, जोश हेजलवुड ने आधे रास्ते में गिरते हुए रोका, वरना ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ा। 45 ओवर के बाद अफगानिस्तान अब कुछ बेहतर महसूस करता हुआ होगा। 227 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हेजलवुड जिन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बहुत अच्छी फील्डिंग करके रन बचाए, थोड़ा सा उनके जो बाजू है उस पर मिट्टी लग गई थी। एक खिलाड़ी उनके लिए पानी और तौलिया लेके आया और अब वो खिलाड़ी बाहर जा रहा है और जोश हेजलवुड तैयार होते हुए। अब कृत्रिम रोशनी जो है वो सूर्य की रोशनी पर हावी होने लगी है, क्योंकि शाम ढल रही है, शाम का धुंधलका ढल रहा है। सूर्य अरेबियन सागर की तरफ हमारे दाईं ओर जा रहा है और अब बहुत ज्यादा साफ दिखाई देने लगी है फ्लड्स लाइट्स की रोशनी। उस फ्लड्स लाइट की रोशनी में जोश हेजलवुड राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए शॉर्ट गेंद, मोहम्मद नबी ने इस गेंद को मारा है घूम के नटराज बनते हुए, और ये 6 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। जोश हेजलवुड ने ये गेंद शॉर्ट की थी, इस गेंद पे उनको पहले सफलता मिल चुकी है, लेकिन मोहम्मद नबी की लंबाई जो है पहले वाले जो बैट्समैन थे उनसे ज्यादा थी, और मोहम्मद नबी ने बहुत आसानी से, क्योंकि लंबे हैं, उनका हाइट ज्यादा है, तो बहुत आसानी से इस गेंद को 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं। 233 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पिछले ओवर में एक छक्का एडम जाम्पा को लगाया जादरान ने। इस ओवर की पहली गेंद पर जोश हेजलवुड को छक्का लगाया मोहम्मद नबी ने। अब देखना है क्या करते हैं, आक्रामक मूड में है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप पर और दिशा भटके, लेकिन मोहम्मद नबी को भी कुछ समझ नहीं आया। मोहम्मद नबी के पैड से टकराई गेंद, उनसे गेंद उनके विचारों में नहीं थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां पर है। गेंद एकाएक उनकी आंखों से ओझल हो गई। वो दौड़ पड़े थे, पर जादरान ने वहां बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और रोका मोहम्मद नबी को, क्योंकि मोहम्मद नबी के ख्यालों से और आंखों से दोनों में गेंद कहीं नहीं थी। जोश हेजलवुड राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए लंबा रन अप है उनका। शॉर्ट गेंद और क्लीन बोल्ड। मोहम्मद नबी ने क्रॉस बैट से तिरछे बल्ले से गेंद की लाइन में आए बिना उसको जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, और हेजलवुड जैसा खिलाड़ी जो कि 140 के ऊपर से गेंद करता है, अगर उसकी गेंद स्टंप्स की तरफ सीधी होगी और आप तिरछे बल्ले से, टेढ़े बल्ले से खेलने जाएंगे, तो आपका हश्र यही होगा जो मोहम्मद नबी का हुआ। विकेटें बिखर गई,
और क्योंकि आजकल आधुनिक क्रिकेट में स्टंप्स में लाइट्स लगा दी जाती हैं, वो लाइट्स जगह जगह फैलने लगी और इसका मतलब मोहम्मद नबी क्लीन बोल्ड अगर आउट। और बहुत सारे दर्शक अभी जो कि संगीत बज रहा है हमारे नीचे, काफी सारे जो है लोग वो भारतीय टीम की जर्सी पहने हुए, हमारे सामने कुछ युवा साथी विराट कोहली की जर्सी पहने हुए और लगातार जो यहाँ संगीत बज रहा है उस पर नृत्य कर रहे हैं। ये खेल के प्रति लोगों का लगन है कि भारत नहीं खेल रहा है तो भी जहां भी हम नजर डाल रहे हैं इस समय बहुत सारे लोग। और अगर मैं बात करूं विजय मर्चेंट पवेलियन से, अगर हम शुरू करें, सामने गरवारे पवेलियन बिल्कुल नीचे वाला स्टैंड फुल है। विजय मर्चेंट पवेलियन से लेकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड और हमारे नीचे सुनील गावस्कर स्टैंड, ये सब IMCA पवेलियन कम से कम निचला हिस्सा तो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो काफी सारे लोग, बावजूद इसके कि भारत इस मैच में नहीं खेल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए और जिस तरह से जो दर्शकों का रिएक्शन था, जो दर्शकों ने बधाइयां दी खड़े होकर अपनी जगह पर, इब्राहिम जादरान को जब उन्होंने शतक पूरा किया वो देखने वाला था। राशिद खान जो कि बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए जाना माना चेहरा है, IPL में खेलते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज के तौर पर पहला रन ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को थर्ड मैन में दिशा दिखाई। राशिद खान गेंदबाज बहुत अच्छे हैं लेकिन बल्लेबाजी भी ठीक करते हैं और कई मौकों पे, खासतौर से IPL में और एक दो मौकों पे अफगानिस्तान के लिए उन्होंने मैचेस भी अपने बल्लेबाजी से जिताए हैं। 101 मैच में 1267 रन उन्होंने बनाए हैं, 60 रन उनका अधिकतम स्कोर है। धन्यवाद हमारे तपस्वी जी। जादरान सामने जोश हेजलवुड के, ये गेंद शॉर्ट गेंद, इसको कट किया है पॉइंट की तरफ, 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, ऑस्ट्रेलिया की खास बात है कि बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। अपने दाईं और गिरते हुए जिस तरह से फील्डर ने इस गेंद को, पैट कमिंस थे वहां पे, जिस तरह से रोका, ये गेंद अगर उनसे छूट जाती तो 2 रन और मिलते, 3 रन जरूर जाते। राशिद खान सामना करेंगे जोश हेजलवुड का। जोश हेजलवुड की बहुत लंबा रनअप है उनका, फील्ड बहुत फैला हुआ उनके लिए। 2 फील्डर ऑन साइड, 3 फील्डर ऑन साइड पे बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर, उसके बारे में बताता हूं आपको। जोश हेजलवुड राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन राशिद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोण का इस्तेमाल करना, एंगल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं और उन्होंने तिरछे बल्ले से इसको दिशा दिखाई। शॉर्ट थर्ड मैन में 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ जोश हेजलवुड का के इस ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 5 विकेट 236 रन के बाद। सामने वाले छोर की तरफ से देखना है किसे बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए। ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल अपना अंतिम ओवर डालने आ रहे हैं। 9 ओवर मेरे ख्याल सुनील अब तक कर चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल 9 ओवर में 39 रन दे चुके हैं और 1 विकेट उनको मिला है। अब उनको बुलाया जा रहा है सामने वाले छोर की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि 50 ओवर में कितना रन बना लेते हैं, कितना टोटल देते हैं, कितने का चैलेंज देते हैं, ये मौका रहेगा। 236 रन है, 4 ओवर में अगर 40 रन भी और बनाते हैं तो कम से कम 275-76 का टोटल हो जाएगा। राशिद खान ने जैसे देखा कि ग्लेन मैक्सवेल आ गए हैं, उन्होंने हेलमेट उतार कर बैटिंग करने का फैसला किया है और राशिद खान को हमने देखा है स्पिनर के खिलाफ बैट, और ये क्या छक्का, बेहतरीन शॉट। राशिद खान ने हेलमेट उतार कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि ग्लेन मैक्सवेल की गेंदों पर प्रहार करेंगे ही करेंगे, और जैसे ही ग्लेन मैक्सवेल ने इस गेंद को किया, शॉर्ट गेंद थी, राउंड द विकेट उन्होंने किया, मिडिल स्टंप पे आती हुई, और इस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से निकाला राशिद खान ने। इस बार राशिद ने फिर एक आक्रामक स्ट्रोक करने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल बहुत तेज तर्रार समझदार गेंदबाज हैं, उन्होंने इस गेंद को तेज किया था, छोटा किया था और उनके पैड्स पर आ रही थी गेंद। राशिद को 1 रन जरूर मिलेगा। इब्राहिम जादरान
उन्होंने हेलमेट उतारने की कोई चेष्टा नहीं दिखाई है। बहुत अच्छी गेंद, ग्लेन मैक्सवेल ने, एक बिल्कुल सेट बैट्समैन है इब्राहिम जादरान, और उनको कुछ नहीं करने दिया। 3 फील्डर ऑन साइड पे बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर हैं। 30 गज के घेरे के अंदर ऑन साइड में कोई फील्डर नहीं है, और इस बार मिड विकेट पे जो फील्डर है उस पर गेंद गई, लेकिन तेज गति से खेला हुआ स्ट्रोक था, तो सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। मोहम्मद नबी, उनके लिए 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पे बिल्कुल तैयार है, और वो जो जहां पे ऑन साइड पे जहां बाउंड्री पे फील्डर लगाए गए हैं वो उनका खास इलाका है। और इस बार लेकिन ये ऑफ साइड में आ रहा है शॉट, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। छोटी गेंद की थी राशिद खान का, जो ऑन साइड पे, लेग साइड पे जो शॉट खेलने का उनका जो शौक है, जो उनका पसंदीदा इलाका है, उसको रोकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने छोटी गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन राशिद ने पीछे हटते हुए पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक टप्पे के साथ गेंद जाके गिरी। 4 रन। और क्या शॉट है, ये आ रहा है डीप फाइन लेग की तरफ, लेकिन 2 रन मिलेंगे। बहुत ही मौका परस्त स्ट्रोक खेला राशिद खान ने, और अच्छा ओवर। इस ओवर में 14 रन मिले हैं अफगानिस्तान को। 47 ओवर की समाप्ति पर 250 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो इस तरह से राशिद ने आते ही कुछ एक रोमांच सा पैदा कर दिया, दर्शक भी उसका मजा ले रहे हैं। अंतिम 3 ओवर में क्या करेंगे, कितने रन बना पाएंगे, ये समय बताएगा, और आप तक उसका आंखों देखा हाल लाएंगे अमित अरुण। Well, the last delivery by Glenn Maxwell looks like has been called as a no ball. ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि एम्पायर ने काफी देर बाद ये निर्णय लिया। Yes. और अब राशिद खान को वापस आना पड़ रहा है। तो अमित, आप बताएं इस गेंद पे क्या होगा? Absolutely. So a lot of drama unfolding here. For once we thought Maxwell's over is completed. In fact, the giant screen also said the run scored, but now it's a free hit, and Rashid Khan tries to again play an attacking shot, and before marker Stoinis can feel that, he'll be able to get another single. Now the over is over. So the 47th over completed. Afghanistan 252 runs for the loss of 5 wickets. So 3 more overs left. That's 18 legitimate deliveries, and Afghanistan would like to score 275, 280. The more the merrier. And now the lights have taken more dominance than the light from the setting sun, as the sun is setting into the Arabian Sea now. Rashid batting on 60 of 7 deliveries. Ibrahim, his first World Cup 100, 5th 100 overall. That was the statistics provided by Prakash Tapasviji, our statistician. Thank you very much. 15 extra so far in this Afghan innings. And Pat Cummins having a quick chat with his bowler, making the field adjustments as well. It is going to be the left arm seamer Mitchell Starc will be bowling from the media end. That's where the Akashvani commentary box is situated. Mitchell Starc so far has bowled 7 overs, and in the 7 overs he's given away 45 runs. He picked up 1 wicket. The 550 has come up in 47 deliveries. Thank you very much to our scorer Sunil Nange, as Mitchell Starc runs in around the wicket and bowls to Rashid Khan. He heaves it towards the mid-off area, and before the fielder at long off, Travis Head could pick that ball and throw it back to the bowler. 1 run results. So Rashid Khan has now put out, which he had taken off when Glenn Maxwell was batting, and intent that he's going to hit him for an attacking shot. And Maxwell in his 10 overs has given away 55 runs, picked up 1 wicket. So good bowling effort by Glenn Maxwell. Adam Zampa has also completed his 10. He gave away 58 and picked up a wicket too. Starc is into his 8th over. Hazlewood is left with 1. Starc now running in. Second delivery. This time to Ibrahim, who just hits it in the leg side region. Will it go all the way? Yes, it does. The ball sails into the crowd for another 6.
Second six coming from the blade of Ibrahim Zadran. Both the sixes coming after he completed his century. So hats off to the way he's building his innings. He's been there from the start. Will he carry his bat for the entire 50 overs? What a six that was. That was hit towards the square leg region into the crowd. And the crowd just dance and get into the sway when they see the ball coming towards them. Mitchell Starc, what different will he do this time? Pat Cummins, some exchange of words with the bowler, as the batter also has a closer look on where the fielders are. 5 fielders are protecting the boundary. In comes Mitchell Starc around the wicket, shot ball, and this has been guided towards the deep third area for a single. That was bowled at 130 km per hour. So the 3 deliveries Mitchell Starc has bowled so far, he's given away 8 runs, importantly. And there is a chant of Rashid going on. Rashid Khan, he's already hit a couple of attacking shots. He's batting on 17 of 8 deliveries. Now set to take on Mitchell Starc around the wicket. Outside the off stump, full swings of his hands, but cannot get that fielder at cover. So a dot ball, that's very good. Bowling by Mitchell Starc. Pat Cummins there at covers. It was hit very hard, almost had a great impact on the hands of Pat Cummins, but a good stop there at covers by the skipper. Mitchell Starc in his 8th over, now running in to bowl the 5th delivery, running away from us from the media end, bowling to Rashid Khan. Left arm around the wicket, short pitched. Rashid hits it towards the offside. The fielder is coming under the ball, and as the ball was dying on him, Marcus Stoinis makes no mistake. Rashid Khan departs. Very good bowling by the experienced Mitchell Starc. He knew that Rashid Khan was attacking him. But a review is being taken here, so umpires are going to look at it again. By the look of it, it appeared a clean catch by Marcus Stoinis. Stoinis, of course, is claiming it, but all eyes on the giant screen as the decision is pending. And we look at the Marcus Stoinis running in to catch that dying ball. Did he get it clearly, or did the ball hit the ground? It's always interesting to see these replays, and they say the hindsight is better than 6x6. But when the action happens real time, it's difficult to really get it. So another look at the replay, and there could be a case that the ball might have touched the ground. So we are having the television umpire look at it, and the television umpire today is Chris Gaffney of New Zealand. The field umpires Michael Goff, Alex Wolff, both from England. Match referee New Zealand player Jeff Crow. And the replays are being looked at. We're still awaiting the decision whether this catch is cleanly taken by Marcus Stoinis. Remember, if there's any doubt, we've seen that the benefit of doubt does go to the batter. So is there enough evidence for Rashid Khan to be the next wicket, or does he survive this particular scare? The spectators are also anticipating what will be the decision. It's a close call. And the best part of cricket is that every spectator is also trying to have their own judgment. काफी समय लग रहा है ये तय करने में, बावजूद के तकनीक, क्योंकि तकनीक अगर आपका काम घटाती है तो बढ़ाती भी है. और वैसे जो ये लग रहा है कैच साफ नहीं था, कैच गिरा है वहां पे, और मोहम्मद नबी की जो ऑब्जेक्शन है, जो आपत्ति है, वो जायज है और नॉट आउट करा देना चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं.
Not out it is. And the cheer of the spectators, a testimony that they've really liked the fact that Rashid Khan survives. So Rashid Khan survives. Marcus Stoinis has both his hands on his head. He cannot believe. He's having a sense of disbelief. But then technology is a force multiplier. And perhaps there was certain doubt about the catch having been cleanly taken. But nonetheless, very good effort by Marcus Stoinis. Once again, it's Ibrahim now, batting on 117, to take the next delivery, which will be the last delivery by Mitchell Starc of his 8th over. He's given away 9 runs so far, including a 6. In comes left-handed Seema, Mitchell Starc, running away from us, around the wicket, to Ibrahim Zadran, who hits it towards the offside. But there is the fielder there, the skipper at the covers, dot ball. So overall, good over by Mitchell Starc, 9 runs coming off it. After 8 overs that he has bowled, he's given away 54 runs, picked up 1 wicket, Mitchell Starc. Afghanistan 261 runs for the loss of 5 wickets after 48 overs. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। So Afghanistan, after 48 overs, 261 runs for the loss of 5 wickets. Significant contribution coming from the centurion of the day, Ibrahim Zadran, their opener. Batting on 117, having faced 139 deliveries. And right now the strike will be taken by Rashid Khan, who ever since he has come has created some event on every ball he has faced. He's batting on 18 of 10 deliveries. The penultimate over to be bowled by skipper Pat Cummins himself. Cummins has bowled impressively today, and these would be the last 12 deliveries of Afghan innings. Pat Cummins has bowled 7 overs, given away 33 runs, hasn't picked up any wicket, but a good economy. What will Pat Cummins do in this penultimate over of Afghan innings? He's trying to get his fielders right. Pat Cummins will be bowling from the Garware end. Rashid Khan all set as Pat Cummins runs in to bowl the first delivery of the 49th over. Chance of Rashid from spectators, and this one goes back into the gloves of the keeper. Rashid Khan is a little surprised that it wasn't called a wide, so it's a legitimate delivery, a dot delivery. Good first delivery by Pat Cummins. 11 more deliveries to go. This one was a short ball that was outside the off stump. Height was also an issue. Rashid Khan was standing tall, so he probably thought it could well be a wide or maybe a no ball. Wasn't the case. This one again has been bowled on the offside. There was enough room for Rashid Khan to hit it. He did hit towards the point area. David Warner was quick on that delivery, restricting it to just a single. That single brings to strike Ibrahim Zadran. What a beautiful innings he's played today. And the stamina that he has shown, he came out along with Rahmanullah Gurbaz after Afghanistan won the toss, elected to bat first, and he's batted from the first over till the penultimate over, having scored 117 runs. Pat Cummins, just 1 run of the first 2 deliveries, runs in to bowl the third delivery over the wicket. Slightly outside the off stump. Ibrahim wanted to heave it over the bowler. Could not make any connection with the ball. Another dot ball. Ibrahim Zadran has batted beautifully. Hasn't given any chances. Has crafted the innings well as well. Ever since he completed his century, there has been an intent to increase the scoring rate as well. Managed to hit 2 huge sixes.
Once again, Pat Cummins running into ball to Ibrahim Zadran over the wicket, and this has been heaved to the longer area, and Manas Labuschagne was trying to come under it but cannot get it. Another 6. Third 6 coming from the bat of Ibrahim Zadran. Afghanistan moved to 268 for 5. So that was a slow delivery. Pat Cummins trying to bring in some variation, but Ibrahim Zadran read that delivery very well and hit that 6 that was only 79 meter distance, but it had written 6 runs on it. Pat Cummins, next delivery, a full toss, has been hit towards the covers. It's gone for a boundary. So first a 6, then a 4. Ibrahim Zadran is ensuring that Afghanistan scores crucial runs in these last balls. He's got 8 4s and 3 6s so far in his innings. That was a full toss delivery, and he did hit it towards the cover areas for a boundary. What will Ibrahim Zadran do now after having scored a 6 and a 4 as Pat Cummins runs in? Should this be a wide? Yes, the open arms of the umpire signalling it's a wide. That will hit Cummins. He won't be happy with that effort. So extra run gets added to the Afghan total. They move on to 273 for 5. Rashid on 19. On strike still is Ibrahim on 127. Last 35 deliveries have yielded 61 runs for Afghanistan. Just a wicket, 2 4s, but 5 huge 6s. In comes Pat Cummins. Short ball has been hit towards the mid-wicket area. Will it go to the boundary? Well, the fielder there has been able to cut that off. That was Glenn Maxwell there. A good effort there in the field. After 49 overs, Afghanistan 275 for the loss of 5 wickets. The current partnership between Ibrahim Zadran and Rashid Khan is 42 runs of just 22 deliveries. Thank you very much to our scorer Sunil Nange for that information. It is hot here in Mumbai, and the substitute fielder has just run from the Afghanistan dugout to offer some water to the batters, maybe with some message as well. Blocks his deliveries. On strike will be Rashid Khan. He wants to hit every ball for a 6. Will he manage to hit a couple of good attacking shots in this last over? Who's bowling the over? Mitchell Starc. His experience is always crucial for Australia. In runs Starc, away from us. Around the wicket to Rashid Khan, full toss. Will he be out? No. The ball sails past the fielder who was standing at the short third, and that goes to the boundary for a 4. Rashid Khan is happy that he got 4 runs, but certainly he didn't have any control on that shot. It was a full toss. There was a fielder standing at the short third position. He did jump as well, but could not really lay his hands on the ball. It sailed past that fielder over the short third into the deep third boundary for 4 runs. So first ball of the 50th over has resulted into 4. Second ball, Mitchell Starc, left arm, around the wicket to Rashid Khan. Short ball this time. Rashid Khan tries to punch it towards the leg side. That ball goes towards the fielder standing at mid-on. No run results. So good comeback after being hit for a 4 on the first delivery. Current partnership, 46 runs of 25 deliveries. Every wicket there has been some partnership for Afghanistan, and that's why they were never truly in a spot of bother. Now the question will be, have they got enough on the board at a good strike rate? Once again, Mitchell Starc bowling the third ball of the last over. Short ball outside the off stump has been hit into the air. The fielder getting it. He would not have any chance. It's a 6. It's a near 6 where the Akashvani commentary box is situated. For once we thought the ball is coming towards us. Glenn Maxwell, the fielder there, did jump, but the ball had enough on it to sail past Glenn Maxwell. The distance covered in that 6, 83 meters.
And a 50 partnership between these two also comes up with that 6. 52 of 25 deliveries. Thank you very much, Sunil Lange, for sharing that particular figure. Once again, Michelle Starc around the wicket to Rashid Khan. Oh, it was a full toss outside the off stump. Rashid Khan, perhaps a little premeditative, wanted to hit it towards the leg side, could not make any connection with the ball. The ball goes into the gloves of the keeper, Josh English. No run results. 52-run partnership now of 27 deliveries between Rashid Khan and Ibrahim Zadran. And last 34 deliveries, 69 runs, 6 sixes. Sixes have come in huge numbers in the last 10 overs. Once again, Michelle Starc bowling to Rashid. Short ball, hits it towards the leg side area. And has it gone all the way? Yes, it has. Another 6. 7-6. 291 for 5. One more delivery left. It's all happening for Afghanistan in the last 10 overs. They wanted few hits from their batters, 4s and 6s. That has happened, and it's becoming pretty competitive now. 291. Michelle Starc unhappy with himself. He's got a lot of experience to ensure that he bowls yorkers and doesn't give much room to the batters. For one last time, Michelle Starc bowling away, running away from us, from the commentary box. This should be a wide. Oh, it's a close call. The umpire does not give a wide. Rashid Khan can't believe that. So it's a dot ball. Afghanistan finished their innings at 291 for 5 of the 50 overs. So the story so far, it's Australia versus Afghanistan here at Wankhede, Mumbai. Afghanistan skipper Hashmatullah Shahidi won the toss, decided to bat first, and courtesy a century, unbeaten century by Ibrahim Zadran, Afghanistan have posted 291. Australia need 292 runs to win at a run rate of 5.84 runs per over. And it'll be very interesting contest because, Dinesh, there is something called scorecard pressure. Afghanistan has scored it. Will Australia manage to score the victory runs? बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग की है अफगानिस्तान ने। तो इस सूचना के साथ कि ऑस्ट्रेलिया को 292 रन बनाने होंगे ये महत्वपूर्ण मुकाबला जीतने के लिए, अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज। हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुने और जुड़े रहें। कार्यक्रम बहुत खास है, कौन बनेगा विजेता। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। कौन बनेगा विजेता? Well, कौन बनेगा? Good evening. This is going to be very interesting to find out कौन बनेगा विजेता। देखिए, बहुत सारी अटकलें खेल के शुरुआत में ही लगने लग जाती हैं, लेकिन कई एश्योरेंसेस भी मिली थी। और जैसा कि अब स्कोर बनाया अफगानिस्तान ने 291 का स्कोर बनाया, 292 रन चाहिए हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर होता है उसमें अटकलें भी बहुत लगती हैं। बाकी क्या होगा, कौन बनेगा विजेता, हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रवीण सोनी मीडिया मैनेजर, राकेश थपलियाल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर। और मैं शुरुआत ये कह के करना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंटली बैंग ऑन हमारे एक्सपर्ट्स ने गेस लगाया था। प्रवीण जी, जो आपने शुरुआत में कहा था ना कि अगर पहले 10 ओवर में इतना स्कोर हो जाए, विकेट ना जाए और इतने 270 प्लस रन बनेंगे, बहुत ही एप्ट था। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा था स्टार्ट जब अच्छा मिलता है आपको तो कहीं ना कहीं आपको एक टेम्पो बन जाता है आपको, और जो प्रॉब्लम में खिलाड़ी होती है उनको आसान लगता है, चल बल्लेबाजी आसान होगी। हालांकि जो पार्टनरशिप्स हुई हैं बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं हुई, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई हैं और शानदार पार्टनरशिप हुई हैं। क्या बल्लेबाजी की इब्राहिम जदरान ने, फुल मार्क्स टू हिम, एंड ये टोटल बहुत कॉम्पिटिटिव है और ऑस्ट्रेलिया के बहुत मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत ही कम्पेटिटिव टोटल है। बॉलिंग की बहुत सारी